नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। तो आज जमी आम डिस्कशन कर सारी अलरेडी तुम नोटिफिकेशन भी मिल जाइए जे 100 MCQs क्लास रही 100टा कंप्लीट MCQs डिस्कशन करवा जोटार कि आमर सबू कंटेंट गुड़ाक कवर हम है एति बड़ जाए आम सब टॉपिक वाइज MCQs गुड़ाक सब सॉल्व करूँ टॉपिक वाइज MCQs सब आम क्वेश्चंस करूँ किंतु आज सेशन रे वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट एवरी टॉपिक सब टॉपिक रो किछि क्वेश्चंस नहीं आज आम क्वेश्चन डिस्कशन करवा ठीक अच्छे। तो से बोली समस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी समस्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे आउ क्वेश्चंस रो आंसर करेंगे है नॉट ए मैटर ऑफ इट इज अ मैटर ऑफ 1 आवर टिके समय अल्प समय लगे सांगे सांगे फटाफट जी आम पोर्शन कवर कर सारी तार पूरा जस्ट समरी वाइज आज आम पूरा डिस्कशन करवा ठीक अच्छे। गुड मॉर्निंग श्वेता अमर रिजवाना रजनी संजुक्ता सागरिका राजश्री यस गुड मॉर्निंग तो चलो स्टार्ट करवा आउ सेशन लेट करवा टिके लेट हो गला पिले सॉरी टिके लेट हो गला है लाइव स्टार्ट करू करू। तो आज रहिबा हमर 100 MCQ सेशन 100 MCQ सेशन समस्ते जो आमर व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी से एक्टिव अच्छा जदि वेल एंड गुड जदि एक्टिव ना हो ताहले जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे से लिंक जाइकरी तमे जॉइन करि परिबो हैला क्लास सरिला परे मु ए MCQ क्लास टा बाय MCQ सेशन टा को मु तमा को शेयर कर देबे तमा को रिवीजन पई बोली हेल्पफुल हबो ठीक अछि। यस दीपांजलि सस्मिता रूपश्री लिलीमानी लिली यस सुचिस्मिता गुड मॉर्निंग अनिकेत गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करबा क्लास हैला फर्स्ट क्वेश्चन समस्त आगे रे During an outbreak investigation, the attack rate among people who consumed a particular food item is 48%. 48%. While among those who did not consume it, it is 6%. Which epidemiological measure best demonstrates the association between the food and the illness? Relative risk, case fatality rate, secondary attack rate, na proportional mortality rate. Kona haba question number 1. Question number 1. Yes. It is question number 1 is A. Yes. Sushmita C. Kundicha good morning. Viswarupa B. B case fatality rates. C. Rupashri Sudipta Aniket Ankit Amar B C कौन B C सब कौच कि हाँ कौन हम यहाँ फैटालिटी रेट ये कौन देखा जाइए कि ये कौन फैटालिटी रेट कथा देखा जाइए अटैक रेट कथा कही किए फैटल ही ना तो फैटालिटी रेट कथा आसो कौन फैटालिटी रेट कथा आसो कौटी आउ जब आम देखा सेकेंडरी अटैक रेट मतलब हेनी ये हेनी पिले कहीं ये पर्टिकुलरली जो मैंने कंज्यूम कर मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कंज्यूम्ड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन बिकम इल बहुत जन एम आमर इल भी हो जाइए ठीक अच्छे। ये आंसर हम आम रिलेटिव रिस्क रिलेटिवली रिस्की अच्छी टिके ठीक अच्छे रिलेटिवली रिस्की अच्छी से बोली आमर रिलेटिव रिस्क हम आंसर देख ये आउटब्रेक देखला बेलू अटैक रेट अमंग पीपल हु कंज्यूम्ड ए पर्टिकुलर फूड आइटम होची 48% माने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो मैंने कंज्यूम करले सेमाने आमर इल हो गले सेमाने देह खराब हो गला ठीक अच्छे। अमंग दोज हु डिड नॉट कंज्यूम इट इट इज 6% ता माने मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी आमर कंज्यूम करि सारछन ना तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम करछन बोली कहले आमर रिलेटिवली रिस्की रहि जाउची से जगहटा रिलेटिवली रिस्क देखा जाउची सेठी आ एठी रिलेटिव रिस्क करा को हम बुझिबा पई बोले हम कोन कहूचे रिलेटिव रिस्क ता हम कोन कंपेयर करछि इट कंपेयर्स द रिस्क ऑफ health event or illness among those exposed to a factor फैक्टर माने कि जे कंज्यूम करछि फूड टाको कंज्यूम्ड द फूड ठीक अच्छे ना। तो ये आमर केते रहिबे 48% नहीं चंदी आउ 6% भलो अछंदी तो 48/6 केते आसी जिवो 8% होची आमर रिलेटिव रेट
8% हो जाउचे हमर रिलेटिव रेट हैला बुझि पालो कोन हैला ओके ठीक अछि जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा हे गेला तो एंड दिस एपिडेमियोलॉजिकल मेजर टा हमर कोन एसोसिएशन को मेजर करछि रिलेटिव रिस्क को मेजर करछि रिलेटिव रिस्क को हम मेजर करके केमिति काढी परिबा एमिति रिलेटिव रेट टा को ए टाइप रा हमें काढी परिबा हैला अफेक्टेड आउ केति के हमर हेल्दी अछंती ठीक यस अनीता गुड मॉर्निंग next question number 2 a patient develop metabolic acidosis due to severe diarrhea which renal response most directly contribute to the restoration of the acid base balance को किया हम रिस्टोर करूची decreased hydrogen ion secretion increased bicarbonate reabsorption and hydrogen ion secretion decreased ammonium formation na increased sodium loss in the urine कौन हम एसिडोसिस देखा जाइए एसिडोसिस कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस सिवियर डायरिया जो एसिडोसिस देखा जाउची माने इंक्रीज हे जाउची कोन बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन आ हाइड्रोजन आयन रो सिक्रेशन एसिडिक कंडीशन यस बी करेक्ट वेरी गुड नेक्स्ट Question number 3. A conscious adult suddenly develops severe airway obstruction while eating. खाइला बेले airway obstruction सही तार देखा जाउची. He is unable to speak or cough effectively. What should the first aider do? First aid जे देबा को जीवो से कोन करिवो फर्स्ट जिंस से कोन करिवो देखिलो give repeated back blows and abdominal thrusts as appropriate immediately perform the blind finger sweeping give water to facilitate the swallowing place the person supine and begin the chest compressions जम्मा भी हमर ए जो ब्लाइंड फिंगर स्वीपिंग करिया कथा नुहे काहे ना जोडा जो अटकी के रही सेडा आउरी मते भीतर को पड़ी परिबो ठीक अछि वी नीड टू गिव रिपीटेड बैक ब्लोज एंड एब्डोमिनल थ्रस्ट्स एज एप्रोप्रिएट एडा को कोन कहै जाउची हेमलिक मैन्यूवर ठीक अछि एडा हमर फर्स्ट एड प्रोटोकॉल हिसाब रे जते बेले हमर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाउची बिकॉज़ ऑफ ईटिंग while eating जदि airway obstruction देखा जाउची ताले ई जिंसडा में करबा हैला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 a patient with chronic alcoholism presents with confusion ophthalmoplegia and ataxia which nutrient deficiency is most strongly associated with this presentation niacin pyridoxine thiamine riboflavin yes heimlich maneuver yes kavita ऑप्थाल्मोप्लेजिया माने कोन ऑप्थाल्मोप्लेजिया आर माने होची पैरालिसिस ऑफ द ocular muscles आ अटैक्सिया माने कोन लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन तो कोड डेफिशिएंसी जो कोई जिंसडा देखा जाउची it is because of the deficiency of thiamine yes Ritanjali Ahalya Sanjukta ठीक अछि thiamine दा कोन विटामिन B1 जोटा की होउची गोटे वाटर soluble vitamin da then loss of coordination yes Ankit next a patient receiving digoxin develop nausea, visual disturbances and ventricular ectopic beats. Which laboratory abnormality increases the risk of digoxin toxicity? Hypernatremia, hypokalemia, hypermagnesemia, hyperchloremia. Kaun haba question? Question number 5. कौन हम ना देख डिगॉक्सिन आमर गोटे पेशेंट रिसीव कला परे सी ए प्रकार किछि डेवलपमेंट देखौछि हैला डिगॉक्सिन कोरुछि कोन एक्जेक्टली ना इट बाइंड्स टू दी सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएस पंप हैला कौन होछि ना डिगॉक्सिन बाइंड्स टू एंड आल्सो इनहिबिट दी बाइंड कला माने इनहिबिट करिवो इनहिबिट दी एक्टिविटी ऑफ दी सोडियम
पोटासियम एटीपीएस पंप जहाद्वारा कि सी पोटासियम रो साइट रे बाइंड कर जाउची आउ ऑलरेडी हमर ब्लड रे हाइपोकालेमिया बा पोटासियम रो लेवल एबे कम देखा जाउची ता जोगु लेस कंपटीशन रहिला कंपटीशन भी कम रहिला पोटासियम मानक भितरे ठीक जहाद्वारा कि मोर डिगॉक्सिन हमर पंप हबो मोर डिगॉक्सिन पंप हबो मोर डिगॉक्सिन पंप हेले आउरी से आसे कि हमर एटीपीएस पंप रे बाइंड करिवो आउरी पोटासियम साइट को ब्लॉक करिवो जहाद्वारा कि आउरी हम पोटासियम रो लेवल हमर कमिकी रहिबो ठीक अछि पोटासियम रो लेवल कमिकी रहिबो ठीक अछि तो ए कंडीशन ता हमर कोन लीड करछि हाइपोकालेमिया को लीड करछि लेस पोटासियम लेवल को लीड करूछि हैला यस हमर जतले हार्ट रेट मते 60 रो तळकु थिबो बोली गले से कंडीशन रे मते डिगॉक्सिन देबा कथा नहे बिकॉज़ ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी एबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन a woman in labor has cervical dilatation from 7 centimeter to 9 centimeter with increasing intensity of contractions which phase of the first stage of labor is she most likely experiencing को फेज टा को सी एक्सपीरियंस करूची हमर जो तीनटा फेज रोची फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर रे तीनटा फेज रोची ठीक अछि से जो तीनटा डिस्टिंक्ट फेजेस को कोन कोन कहया जाउची गोटे होची लेटेंट फेज फर्स्ट टा जोडा आ गोटे हला एक्टिव फेज सेकंड टा जोडा आ गोटे हला ट्रांजिशनल फेज थर्ड टा जोडा ठीक अछि तो एडा हमर तीनटा जगह स्टेज तीनटा ठीक ए तीनटा जगह स्टेज भितरे लेटेंट फेज रे हमर 0 टू 3 टू 4 सेंटीमीटर जाय हमर देखा जाउची कोन सर्वाइकल डायलिटेशन ठीक एक्टिव फेज रे 4 टू 7 सेंटीमीटर जाय देखा जाउची आ ट्रांजिशनल फेज रे 8 टू 10 सेंटीमीटर जाय सर्वाइकल डायलिटेशन देखा जाउची हैला तो ए भितरे जदि हमें कहबा कि 7 टू 9 सेंटीमीटर जाय एक्सटेंड करिछि बोली कहले 7 टू 9 सेंटीमीटर जाय एक्सटेंड करछि माने एठी हमर ट्रांजिशनल फेज रे रहिछि हैला ट्रांजिशनल फेज रे रहिछि यस लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशनल यस मामाली 6 टा सी हबो yes 6टा सी हबो तो ए ट्रांजिशनल फेज रे अटकी छि दिस स्टे फेज ऑफ द लेबर द woman is likely to be experiencing next which indicator is considered one of the most sensitive indicator of the socio-economic and health status of a community infant mortality rate crude birth rate general fertility rate na crude death rate कोन हबो yes a yes very good cartoon or a p infant mortality rate will be the correct answer socio economic health status ta amar community ro decide kurchi infant ro mortality rate ta ठीक अछि infant ro mortality rate ta next question number 8 which part of the nephron is normally impermeable to water but actively transports sodium potassium and chloride ions permeable water nuhe permeable to water nuhe it is impermeable to water impermeable to water देखो हमर जो लूप ऑफ हेनले रो दीटा रीजन रहउची एडा होची हमर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आ ये हेगला हमर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ठीक अछि यस 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 अंकित ठीक अछि अच्छा तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रे कोन रही छि हमर एक्वापोरिन रो चैनल्स उडा को रही छि जो एक्वापोरिन रो चैनल उडा को कि हमर कोन करछि वाटर रो परमेबिलिटी को इंक्रीज करउछि एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रे हम देखि पारु छि दैट दिस रीजन इज परमेबल टू वाटर but impermeable to salt ठीक तार ऑपोजिट पोर्शन टा ही जाउची हमर आर उल्टाटा हैला एडा जदी हमर परमेबल टू वाटर देन दिस पोर्शन इज impermeable to water but it is permeable to salt तो एडी ascending limb of loop of Henle ही जबो पोर्शन टार करेक्ट आंसर हैला
yes, because it lacks the aquaporine channels. Very good Ankit. Hela, very good. Jiba next. Jiba next. Hela, आ loop of Henle रे हमरो ए activity रहिबा जोगु. Loop of Henle रो हमरो ए activity टा रहिबा जोगु. They decide the concentration of urine. ता माने this portion, the loop of Henle is responsible for urine concentration in the normal stage. Hela, जतबेले हमर डिहाइड्रेटेड कंडीशन हैला कि कोन हैला बोली कहले तो सेतबेले एडीएच हार्मोन्स रो रोल आसी जाउची ना से टाइम रे हैला सेटा अलग कथा बट नॉर्मल स्टेज रे हमर लूप ऑफ हेनले टा रिस्पांसिबल फॉर डिसाइडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन. आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient with suspected spinal injury must be moved because the location is unsafe. Which technique is most appropriate? गोटे spinal injury हेची गोटे पेशेंट को ताको से जगह रो हमको हटेबा दरकार हैला. साउंड स्लो आछि एबे एबे ठीक आसिला टे माइक टा तल खसी जाऊँगी तो से बोली ही प्रॉब्लम हो आई गेस एबे ठीक थी. तो ये कौन है ना सस्पेक्टेड अच्छी स्पाइनल इंजुरी ताको आमको से जगार घुंचेकी नेबार अच्छी तो को टेक्निक टा आम यूज करवा. सेट द पेशेंट अपराइट बिफोर मूविंग, मेंटेन स्पाइनल अलाइनमेंट एंड यूज अ कोऑर्डिनेटेड लॉग रोल टेक्निक, पुल द पेशेंट बाय द आर्म्स, फ्लेक्स द पेशेंट्स नेक टू चेक द एयरवे पेटेंसी. कौन हम क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Log of techniques. Yes, cartoon. Yes, Mr. Dinesh. It is maintain the spinal alignment and use a coordinated log roll technique. Eda hijiba correct answer. Hela Priyambada. Next question number 10. Which finding is most characteristic of the protein energy malnutrition of the marasmic type? Marasmic type. Generalized edema, moon phase, severe wasting with loss of subcutaneous fat, enlarged fatty liver. Enlarged fatty liver. Question number 10. It is severe wasting with loss of subcutaneous fat. Very good. Suman, Mamali, Sudipta. Severe wasting with loss of the subcutaneous fat. ठीक. अच्छा severe wasting जो हमरो देखा जाउची एठी मसल फैट सबक्यूटेनियस सब जिंस रे वेस्टिंग मसल्स रो लॉस देखा जाउची हैला मसल्स लॉस सब देखा जाउची. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A patient with SIAD SIADH has serum sodium of 118 MEQ per liter. Which nursing intervention is most appropriate? A. Encourage the unrestricted oral fluids, administer hypotonic IV fluid, restrict the fluid and monitor the neurological status, encourage the low sodium diet. Encourage the low sodium diet. कौन करेगा सियाड रो माने कोन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन नै कि syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone. ठीक अच्छे तो ये कौन है एनकरेज दी अनरिस्ट्रिक्टेड ओरल फ्लूइड ना कौन करवा. क्वेश्चन नंबर 11. जितेबाला आमर 118 अच्छी एमक्यू पर लिटर से बहुत ही लो देखा जाउची हैला. कौन लो देखा जाउची सोडियम बहुत लो देखा जाउची तो सोडियम लो अच्छी माने एटा आमर हाइपोनाट्रेमिया कंडीशन. हाइपोनाट्रेमिया कंडीशन ठीक अच्छे. आ ये हाइपोनाट्रेमिया कंडीशन रे वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लूइड एंड मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस. फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एठी आमर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जोड़ा कि आमे देखिया कथा. नेक्स्ट. A postpartum woman develop heavy vaginal bleeding with a soft boggy uterus. What is the nurse priority intervention? Massage the uterine fundus, administer oral iron, place the woman in lithotomy position, encourage ambulation. Encourage ambulation. कौन करवा जगह सॉफ्ट बॉगी यूटेरस अच्छी माने कौन देखा जाउची यूटेराइन अटोनी. यूटेराइन अटोनी ठीक. तो ये कंडीशन रे हमें कौन करिया दरकार we need to yes very good
we need to massage the uterine fundus. Uterine रो जो fundus ऊपर portion टा ताको massage करिया दरकार, so that आमरा this should be the primary intervention है ना. heavy bleeding को आमरा ये करिया पाई बोली control रहने पाई. In screening for a disease, which characteristic is most desirable for the initial screening test? High specificity, high sensitivity, high case fatality rate, high positive predictive value only. कौन हबा question number 13. Yes. Question number 13, it is high sensitivity. High sensitivity हबा एटा होची हमर प्राइमरी गोल जहा द्वारा कि आमे अधिकार अधिका केस को आमे डिटेक्ट करि परिबा. हाई सेंसिटिविटी कोन एंश्योर करची वेरी लो रेट ऑफ द फॉल्स नेगेटिव्स हैला. it ensures very low rate of false negatives. ठीक अच्छे. तो हाई सेंसिटिविटी इज द फर्स्ट थिंग, द डिजायरेबल स्क्रीनिंग टेस्ट इनिशियल स्टेप बेटा. नेक्स्ट, विच ईसीजी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन? ईसीजी वेव को ईसीजी वेव टा हमर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करूची. यस, हमर जदि हम ईसीजी वेव कथा देखिबा, ईसीजी रो फुल फॉर्म कोन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक अच्छे. आ ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भितर आमर जो वेवटा आसूची ए टाइप रो वेव देखा जाउची एमती, तापरे ए वेवटा, तापरे ए वेवटा. एडा हला पी वेव, एडा हला क्यू आर एस, तापरे ये गला टी वेव. ठीक अच्छे. तो एडी आमर जो पी वेव कौन रिप्रेजेंट करूची? पी वेव रिप्रेजेंट करूची एट्रियल डीपोलराइजेशन. एट्रियल डीपोलराइजेशन. तापरे क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट करूची ventricular depolarization. तापरे टी वेव रिप्रेजेंट करूची ventricular repolarization. करेक्ट. ठीक अच्छे. तो क्वेश्चन कौन पचारची? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कथा पचारची. तो आंसर एडी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो. करेक्ट आंसर डी. डी ठीक अच्छे. सुमन, मामाली, ममता, अर्पण ठीक. A burn victim has circumferential burns around the chest. Which complication requires the most urgent assessment? Impaired chest expansion, localized itching, mild dehydration, hyperpigmentation. कौन देखा जिबो? burn victim रो circumferential burn देखा जाउची chest around रे. It is impaired chest expansion. chest region रे जेहेतु bones देखा जाउची तो full thickness circumferential bone देखा जिबा जगु inelastic band of the scar tissue हमर फॉर्म ही जाउची, जहा द्वारा कि हमर chest रो मूवमेंट ता बा chest wall रो मूवमेंट ता restrictive ही जाउची. ठीक अछि. ए जो circumferential bones ता chest around रे देखा जाउची, it leads to full thickness circumferential bones around the chest and create a tough inelastic band of scar tissue. inelastic band of scar tissue जोड़ा को कि एस्कार बोली कुहा गला. जहा द्वारा कि कौन हो जाउची? रेस्ट्रिक्टिव हो जाउची. कौन? इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल रो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होची ए जगह रे. ठीक. तो एडी हमर ऑप्शन नंबर ए ही जब करेक्ट आंसर. डन. Yes, very good. Lucky, Suchasmita, Rizwana, very nice. Next question also. Which combination is most appropriate for a patient with iron deficiency anemia? Polished rice plus tea, milk plus refined flour, green leafy vegetable plus vitamin C rich food, high fiber cereal and coffee. कौन हवा? Question number 16. Yes. क्वेश्चन नंबर 16. समस्ते जो मैंने भी देखो सेशन को लाइक कर दियो हैला. हाँ
एटा हो जाबा आंसर ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लस विटामिन सी रिच फूड्स ठीक आ ए विटामिन सी रिच फूड कौन करूची हमर नॉन हिम कंपोनेंट रो ग्रोथ को सी हेल्प करूची ता सहित ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमर कौन करेबो ना आयरन डेफिशिएंसी को सी एलिमिनेट करेबो ठीक आयरन रिच जिंस हम बॉडी रे से इनकॉर्पोरेट करेबो करेक्ट नेक्स्ट ए पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी अछि डेवलप मसल वीकनेस कौन कौन देखा जाउची मसल वीकनेस देखा जाउची पैरास्थेसिया देखा जाउची ईसीजी चेंजेस देखा जाउची विथ पीक्ड टी वेव्स व्हिच इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इज मोस्ट लाइकली टी वेव पीक देखा जाउची एठी टी वेव इज पीक हाइपोकैल्सेमिया हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया हाइपरनाट्रीमिया सीकेडी जतबेले होउची ना जतबेले सीकेडी एठी देखा जाउची सीकेडी जोड़ी देखा जाउची सीकेडी रे कौन होची इट reduces the kidney's ability to excrete urine to excrete potassium ठीक अछि तो पोटेशियम एक्सक्रीट न करि परिले कोन हबो हाई लेवल ऑफ पोटेशियम retains in the body high potassium retains in the body as a result of which कौन हबो ए कंडीशन डा हाइपरकैलेमिया कंडीशन टा एठी देखा जिवो हाइपरकैलेमिया कंडीशन एठी देखा जिवो ठीक ऑप्शन नंबर बी ही जाउची करेक्ट आंसर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन number 18 a pregnant woman at 34 week presents with painless bright red vaginal bleeding the uterus is soft and non tender which condition is most likely abruptio placentae uterine rupture placenta previa threatened abortion कौन हबो क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 यस पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग एडा होची कहार इंडिकेशन डा एडा होची गोटे हमर हॉलमार्क प्रेजेंटेशन डा कहार प्लासेंटा प्रेभियार ठीक अछि जोटा कि हमर थर्ड ट्राइमेस्टर रे देखा जाउची आ सॉफ्ट और नॉन टेंडर यूटेरस सहित से अकम्पनी हेगी रे आसीची आ जदी तार कंट्रास्ट रे देखिबा अब्रप्शियो प्लासेंटा होची कोन इट प्रेजेंट्स द पेनफुल ब्लीडिंग विथ रिजिड एंड टेंडर यूटेरस आर उल्टाडा होची पूरा एडा ठीक अछि एडा हमर पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग ठीक जोटरे कि यूटेरस ता सॉफ्ट और नॉन टेंडर ही जाउची अब्रप्शियो प्लासेंटा रे कोन होची ना हमर यूटेरस ता रिजिड एंड टेंडर ही जाउची also painful bright red vaginal bleeding सहित ये associated हेगरी रोची correct next question number 19 a village report 20 new cases of tuberculosis during 1 year among a population of 10000 10000 population भितरे हमर गोटे वर्ष भितरे 20 new cases देखा जाउची कहार tuberculosis रो which epidemiological measure is being described here को measure टा एठी describe करा होची yes cartoon ठीक अछि रीता कर्मी सी prevalence incidence case fatality attack rate एडा हमर एपिडेमियोलॉजी को मेजर टा को मेजर करछि एडा इंसिडेंस को मेजर करछि हला इंसिडेंस को मेजर करछि इंसिडेंस रो माने कोन द नंबर ऑफ न्यू केसेस of a disease that develop in a specific population over a defined period of time हमर इंसिडेंस एटा को मेजर करछि हमको एटा इंसिडेंस टा हमर एटा मेजर करछि बाकी प्रेवलेंस कोन करछि प्रेवलेंस हमर उल्टाडा माने ओल्ड केस और न्यू केस तीटा जगह मिसे गरी ओल्ड केस और न्यू केस ठीक new case incidence very good Suryakant next question number 20 which hormone is primarily responsible for increasing the calcium reabsorption in the kidneys and stimulating the activation of the vitamin D calcitonin aldosterone parathyroid hormone antidiuretic hormone question number 20 कौन है जो बेटा क्वेश्चन नंबर सी रिअब्सॉर्ब कैल्शियम रिअब्सॉर्प्शन को कौन करछि एठी इंक्रीज करछि
parathyroid hormone टाको कौन कहा जाउची it is known as parathormone आउ ये कौन करची ना it induces osteoclastic activity ठीक जहा द्वारा की कौन देखा जाउची increased level of calcium in the blood हैला एंड सेथि पई बोली पैराथॉर्मोन को कौन कहा जाउची पैराथॉर्मोन को हमर हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोली कहा जाउची हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोली कहा जाउची आर एंटागोनिस्टिक रे जदी देखिबा हमें थायराइड ग्लैंड्स रो parafollicular cells रू हमर रिलीज होची गोटे हार्मोन सेटा हला कैल्सिटोनिन ये कौन करची ए हार्मोन टा होची हमर हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन डा ठीक अछि जो ठुकी हमर कोन देखा होची डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस इन द ब्लड वेरी गुड मामाली हैला वेरी गुड कैल्सिटोनिन हमर उल्टा कामटा करची ता माने पैराथॉर्मोन आउ कैल्सिटोनिन ए दीटा हमर एंटागोनिस्टिक हार्मोन हे जिबे एंटागोनिस्ट हार्मोन हे जिबे डन सेमिति आउ गोटे मध्ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखौची हम बॉडी रे आउ दीटा हार्मोन अछि जो माने एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखैचोंदी किए से हार्मोन दीटा के कहि परिबो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखेबार आउ दीटा हार्मोन मध्ये हम बॉडी रे प्रेजेंट अछि जोटा कि हमर ग्लूकोज लेवल रे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखौची तो से ग्लूकोज लेवल रे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के देखौचोंदी इट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन होची हमर हाइपरग्लाइसेमिक while insulin होची हमर हाइपोग्लाइसेमिक हैला तो क्वेश्चन नंबर 20 पैराथायराइड हार्मोन हेगला करेक्ट आंसर नेक्स्ट insulin and glucagon yes Sudipta done next question number 21 a conscious diabetic patient is sweating trembling and confused capillary blood glucose is 52 milligram per dl and the patient can swallow safely what should be done first administer rapid acting oral glucose give insulin immediately restrict the carbohydrate intake place the patient in the Trendelenburg position yes good afternoon Momita question number 21 जाए yes we need to administer rapid acting oral fluid जेतु एटी जो 52 आसी जाईची ना 52 आसी जाईची ता माने एटी से हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन टा को एक्सपीरियंस करूची हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन को सी एक्सपीरियंस करूची ठीक तो ए जगह रे हमें रैपिड एक्टिंग ओरल ग्लूकोज देबा से जगह को माने संग संग कंपेंसेट करबा पई बोली हैला संग कंपेंसेट करबा पई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी इज क्लासिकली एसोसिएटेड विथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस विटामिन सी विटामिन B12 विटामिन के विटामिन ए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यस कौन देखा जाबो जगह रे विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाउची आउ ता सहित अदर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मध्ये हमरो ता सहित एसोसिएटेड हेगी रहउची फटाफट अन्य सब विटामिन्स उडा को मते देखि देबा विटामिन B12 तार साइंटिफिक नेम होची सियानोकोबालामाइन ठीक विटामिन सी रो साइंटिफिक नेम हला कोन इट इज ascorbic acid ठीक विटामिन के रो साइंटिफिक नेम हला फाइलोक्विनोन और विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम हला रेटिनॉल ठीक अछि तो विटामिन ए रो जदी डेफिशिएंसी कथा कहिबा विटामिन ए रो डेफिशिएंसी कथा कहिबा जदी इट इज नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोफ्थैल्मिया विटामिन के रो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कथा जदी कहिबा विटामिन के जेहेतु हमर क्लॉटिंग विटामिन दा क्लॉटिंग पाई बोली से रिस्पांसिबल थाए हैला क्लॉटिंग पाई बोली से रिस्पांसिबल थाए तो जदी हमर क्लॉटिंग विटामिन रो डेफिशिएंसी रहउची त माने सब क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स उडा को देखा जिवना ऑल टाइप ऑफ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विल बी सीन ठीक
विटामिन सी रो ये रे डेफिशिएंसी रे स्कर्वी देखा जाउची जोडा कि हमर ब्लीडिंग गम्स हैला ब्लीडिंग गम्स ओके कम अमर रितांजलि कविता मामाली शांतनु यस ठीक अछि यस ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखा जिवो आ जदी देखिबा ए भितर हम विटामिन ए आउ के होची फैट सॉल्युबल विटामिन्स ठीक आ विटामिन B12 आउ सी होची हमर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स तो वाटर सॉल्युबल विटामिन भितरे आसी जाउची हमर के विटामिन सी आउ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैला व्हाइल फैट सॉल्युबल भितरे के आसी चंदी इट इज विटामिन ए डी ई के ए आउ के भितर ऑलरेडी डिस्कशन करि सारले हैला डी कोन डी रो साइंटिफिक नेम हैला कैल्सीफेरॉल तार डेफिशिएंसी रे सब बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स गुडा को देखा जाउची हैला बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स गुडा को देखा जाउची विटामिन B12 हबनी मु जानि पाली तमे काई के कहूछ हबनी मु बुझे दोची सेटा कोन हैला देखो कैल्सीफेरॉल हमर बोन रिलेटेड सब डिसऑर्डर्स गुडा को देखा जिवो जेमिति कि रिकेट्स होची इन चाइल्डहुड आउ ऑस्टियोमैलेशिया होची इन अडल्टहुड ठीक अछि आ विटामिन ई रो साइंटिफिक नेम हैला टोकोफेरॉल आउ तार डेफिशिएंसी रे एमिति कम डेफिशिएंसी अल्प बहुत डेफिशिएंसी रे सेमिति किछि हमर विशेष फरक पड़िबनी किंतु जेतेबेले एक्सट्रीम डेफिशिएंसी देखा जाउछि विटामिन ई रे सेतेबेले कोन हम इनफर्टिलिटी को लीड करि परिबो ठीक अछि अच्छा तो लाइव विथ भूमि यस अंकित हमर सनशाइन विटामिन बोली कहै जाउछि विटामिन डी को हैला आ विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोली कहै जाउछि हैला अच्छा तापर आमे कोन कहउथले कोन ना विटामिन B12 सियानोकोबालामाइन हमर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे होबनी देखो विटामिन B12 जदी आमे प्रॉपर जदी देखिबा विटामिन B12 रो डेफिशिएंसी रे हमर पर्निशियस एनीमिया देखा जाउछि हैला पर्निशियस एनीमिया देखा जाउछि जो पर्निशियस एनीमिया रो माने कोन पर्निशियस रो एनीमिया रो माने होची कि द इरेगुलर साइज ऑफ द आरबीसी रो साइज ता हमर रेगुलर होबनी कोडा बड़ होबो कोडा सान होबो ता माने मेगालोब्लास्टिक भी हेई पारे आरबीसी रो साइज अबनॉर्मली बढ़ी भी पारे आरबीसी रो साइज टा अबनॉर्मली कमी भी पारे माइक्रोसाइटिक भी हेई पारे और मेगालोब्लास्टिक भी हेई पारे तो इन एनी सिचुएशन हमर पर्निशियस एनीमिया केस टा हमर विटामिन B12 डेफिशिएंसी रे देखा जाउची तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टा मध्ये गोटे टाइप रो पर्निशियस एनीमिया ही ना तो हमकु से जिंसटा को सैटिस्फाई करिया पई बोली आउ अन्य ऑप्शंस किछि नाही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टा हमर विटामिन B6 रो डेफिशिएंसी रे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा जाउची राजी पाइरिडॉक्सिन रो डेफिशिएंसी रे ठीक किंतु विटामिन B6 तो नाही ना इठी तो बेस्ट सुइटेबल जो ऑप्शन टा हबो सेटा हबो विटामिन B12 करेक्ट हैला तो यस B12 आल्सो कॉजेस पर्निशियस एनीमिया बुझि पालो तो एबे लाइव विथ भूमि के कहउथला हैला तो बेटर ऑप्शन चारटा जगह ऑप्शन भी तो नहीं जदी हमें कोडा हेले तो गोटे करिबा ना नहीं तो विटामिन B12 इज द मोस्ट सुइटेबल वन जोटा कि हमें अप्लाई कर परिबा इठी यस हां विटामिन B12 विटामिन B9 दा होची फॉलिक एसिड जोटा कि हमर एनीमिया कॉज करोची आरबीसी रो नंबर टा रिड्यूस कर दोची आरबीसी रो नंबर टा रिड्यूस कर दोची ठीक अछि फॉलिक एसिड हमर एरिथ्रोपोइसिस पई बोली दरकार डन यस हां इट इज अ टाइप ऑफ पर्निशियस एनीमिया यस शांतनु हैला आसा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए पेशेंट with left sided heart failure develop acute pulmonary edema which finding is most expected bradycardia with dry skin crackle with severe dyspnea and pink frothy sputum massive peripheral edema without respiratory symptoms increased bowel sounds ha follow it it is left sided heart failure हमरो फ्लूइड एक्युमुलेशन रे देखा जाउची जहा द्वारा कि हमरो ब्रेथ शॉर्टनेस देखा जाउची आ ता संगे रे क्रैकलिंग साउंड आसुची हमरो ब्रीथिंग टाइम रे एंड द क्लासिक साइन हियर इज द क्रैकलिंग विथ सिवियर डिस्पनिया एंड पिंक फ्रोदी स्पटम हैला पिंक फ्रोदी स्पटम जेहेतु लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हमरो कॉज काहे कि होची ड्यू टू द फ्लूइड एक्युमुलेशन ठीक अछि जहा जोगु कि हमरो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर्ली न हेई परिबा जोगु गैसियस एक्सचेंज टा प्रॉपर्ली न हेई परिबा जोगु हमरो डिस्पनिया देखा जाउची which is resultant by pink frothy sputum हैला yes next question number 24
A woman receiving magnesium sulfate for severe preeclampsia develop absent patellar reflexes and respiratory depression. Which medication should the nurse anticipate? Oxytocin, methylergometrin, calcium gluconate na misoprostol? Misoprostol. मैग्नेशियम नहीं है यस यस झसकेतन ठीक अच्छे वेरी गुड देख मैग्नेशियम जेहेतु नहीं मैग्नेशियम सल्फेट तार एंटीडोटा कौन कैल्शियम ग्लूकोनेट बस तार मैग्नेशियम रो एंटीडोट होची कैल्शियम ग्लूकोनेट ठीक प्रीएक्लेम्सिया कंडीशन रे ये सब जिंस गुड़ाक जो देखौची एडा बिकॉज ऑफ द मैग्नेशियम तो ताको एंटीडोट दे गिरी आमे कैल्शियम ग्लूकोनेट दे परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन which situation best represents the secondary prevention secondary prevention टा को हमर कोन डिनोट करछि secondary prevention हमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रिवेंशन उडा को कोन it is screening for the cervical cancer एडा होचा हम सेकेंडरी प्रिवेंशन टा हेल्थ एजुकेशन देबाडा एडा कोन हि जिबा हमर प्राइमरी प्रिवेंशन ठीक आउ एपटे हमर रिहैबिलिटेशन हैला कि फिजियोथेरेपी हैला ए दीडा हि जाउचा हमर टर्शियरी प्रिवेंशन रो एग्जांपल while screening for the cervical cancer this can be the secondary prevention ro example जेमिति कि pap smear वगैरह सब करिगिरी pap smear test वगैरह सब करिगिरी हमरो सब दिया जाउची एटा हैला very nice next question आसो question number 26 a lesion affecting the posterior pituitary would most directly impair the release of which hormones किछि गोटे लेजियन डे हेची किछि गोटे माने प्रॉब्लम हेची किछि गोटे माडडे बाजी जाईची कोठी की इंजुरी हेची हमरो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हमर आउ कोन भी कहा जाउची न्यूरो हाइपोफाइसिस बोली कहा जाउची आ न्यूरो हाइपोफाइसिस रो हमर दीटा हार्मोन रिलीज होय गोटे होची ऑक्सीटोसिन आ गोटे होची वैसोप्रेसिन ठीक अछि ता माने जदी हमर कोनसी लेजन देखा जाउची न्यूरो हाइपोफाइसिस रे दैट मींस हमर एडीएच आ ऑक्सीटोसिन हार्मोन रो रिलीज ता इंपेयर हे जिवो हैला ऑक्सीटोसिन और एडीएच रो हार्मोन रो रिलीज टा इंपेयर हे जिवो ना स्निग्धा प्रियंबदा दिव्यरंजन सुदीप्ता अनिकेत मनीषा अनीता यस next a patient has a suspected fracture of the femur following trauma which transportation the priority is to before transportation the priority is to attempt straighten the limb forcefully massage the injured area immobilize the limb in the position found encourage weight bearing to assess severity already तार trauma हेची कोठी ना femur रे ठीक अच्छे ताको माने आमे इमिति हीन काम करिबा गोटे हाँ हीन काम करिया कोन ना वी विल बी एनकरेजिंग वेट बियरिंग टू असेस द सिवियरिटी माने जगे जगे माने वेट पके पके देखिबा केते काटुची कोन काटुची तो ए जिंसडा तो जमा करिवनी हैला जमा करिवनी धर्म सहिवनी मसाज भी करा जीवनी से जगह को अटेम्प्ट टू स्ट्रेटन द लिम्ब फोर्सफुली जो जगह माड़ बाजी जी बोली कहले सीधा करके देखिबा टी बंका टेढ़ा करके देखिबा मने मने निजे निजे डॉक्टर हेबानी आमे वी शुड बी इमोबिलाइजिंग द लिम्ब इन द पोजीशन फाउंड जो पोजीशन रे हमगु देखा जाला से पोजीशन रे ट्राई करिबा जे जेमिति मूवमेंट हमरो से जगह रे न हो हैला जते कम रो कम मूवमेंट हबो सेते बेटर तो वी नीड टू इमोबिलाइज द लिम्ब इन द पोजीशन फाउंड नेक्स्ट व्हिच पेशेंट इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द refeeding syndrome patient with mild overweight patient who has consumed a normal diet for several weeks patient with acute appendicitis severely malnourished patient receiving nutrition after a prolonged starvation refeeding syndrome टा हमरो तारो greatest risk of refeeding syndrome refeeding syndrome रो माने कोन yes immediate देखिबा हमें एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करबा अधिकार यस शांतनु अच्छा कौन करबा ए जगह रीफीडिंग सिंड्रोम ना हमर कोन रहउची सिवियरली मालनरिश्ड पेशेंट को रिसीव करबा न्यूट्रिशन आफ्टर ए प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन बहुत समय जाय से स्टार्व करके थिला एक्सेसिव अमाउंट रो जते बेले हमें फीडिंग दे दोउचे से टाइम रे हमर से जगह रे रिस्क ता रहउची रीफीडिंग सिंड्रोम रो नेक्स्ट क्वेश्चन a patient with COPD has chronic carbon dioxide retention which acid base imbalance is most likely
यस गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग स्वयं कौन हम क्वेश्चन नंबर 29 हम ऑप्शन नंबर सी वेरी नाइस everyone it is respiratory acidosis with renal compensation respiratory acidosis with renal compensation very nice question number 30 during antenatal assessment a pregnant woman has bp 170 by 110 mmHg severe headache visual disturbances and proteinuria which condition is most consistent with these findings mild gestational hypertension severe preeclampsia chronic hypertension without complication na gestational diabetes mellitus gestational diabetes mellitus मैम ओसीडी लैंग्वेज कुछ नहीं समझ आती ओसीडी नहीं है बाय द वे वो ओडिया है ओडिशा ठीक अच्छे इट इज क्रोनिक हाइपरटेंशन ना कौन अरे नहीं नहीं कौन कहूँ कि रे मु इट इज सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है कहीं आमर बीपी अच्छी 170 by 110 170 by 110 आ 160 by 110 रु जदि हायर हो जाउची बीपी ता माने एडा हमर प्रीएक्लेम्सिया कंडीशन को जस्टिफाई करछि ता संगे हेडेक आउ प्रोटीनुरिया कंडीशन मध्ये एसोसिएटेड हेगी अछि माने एडा हमर प्रीएक्लेम्सिया रो कंडीशन टा ठीक तो एडी ऑप्शन नंबर बी हो जाउची करेक्ट आंसर next the secondary attack rate is particularly useful in assessing the transmission of infection among the general population household or close contact of the primary cases hospital staff only immunized individuals acha spelling mistake okay it's okay एटा कोन हे जबो क्वेश्चन नंबर 31 it is option number B household or close contact of the primary cases तो ये secondary attack rate रे हमर कोन मेजर करा हो actually it actually measures the spread of infectious diseases from an index or primary case to susceptible individuals within a closed group or specific social unit like school household etc ठीक अच्छे पूरा डेफिनेशन भी लिखिदेली है ना पूरा डेफिनेशन भी लिखिदेली ऑप्शन नंबर सी होची एडी करेक्ट आंसर नेक्स्ट सॉरी बी होची एडी करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच पोर्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ड्यूरिंग द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सोमैटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक डिवीजन ना एंटेरिक नर्वस सिस्टम कौन हम it is हाँ 32 C सुमन मोमिता C it is sympathetic division fight or flight response टा हमर केमिति आसुची हमर आसुची adrenal gland रो तार मेड्यूला पोर्शन रे थिबा एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रो एपिनेफ्रिन आउ नॉरएपिनेफ्रिन रो ठीक अछि ता माने एठी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बा सिंपैथेटिक डिवीजन जो हमर फाइट फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स ता देखा जाउची अब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ता जोटा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जोटा सी हमर रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स ता देखौची हैला next question number 33 a patient with a nosebleed should generally be positioned supine with the head tilted backward sitting forward with the nose pinched prone with the head turned sideways flat with the legs elevated कौन हबो जहारो कि nose bleeding देखा जाउची
नोज ब्लीडिंग देखा जाउची तो एठी कोन हे जिवो वी नीड टू सिट मेक देम सिट फॉरवर्ड विथ द नोज पिंच्ड द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज शुड बी पिंच्ड आउ फॉरवर्डली से हमरो बसिबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच लैबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया increased serum ferritin increased mean corpuscular volume decreased total iron binding capacity na decreased serum ferritin फेरिटिन टा कोन फेरिटिन टा होचे गोटे प्राइमरी सेल्युलर स्टोरेज प्रोटीन फॉर आयरन हैला प्राइमरी cellular storage protein for iron ठीक अच्छे फॉर आयरन तो एठी हमर डिक्रीज सीरम फेरिटिन जो आम जानि परिबा जे हमर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हिची एडा होची गोटे हमर मेजर लैबोरेटरी फाइंडिंग गोटे मेजर लैबोरेटरी फाइंडिंग गोटे नेक्स्ट अ पेशेंट विथ एडिसन्स डिजीज इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एट व्हिच इलेक्ट्रोलाइट पैटर्न हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपोकैलेमिया हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपरकैलेमिया हाइपरनाट्रेमिया एंड हाइपरकैलेमिया हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपोकैलेमिया क्वेश्चन नंबर 35 यस आमर एडिसन्स डिजीज टा केते बेले देखा जाउची जते बेले आमर कोन होउची ना डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन आ एल्डोस्टेरोन इन जनरल बॉडी रे कोन करूथुला ये आमर सोडियम को रिटेन करूथुला रिटेन सोडियम एंड एक्सक्रीट करूथुला पोटेशियम एटा नॉर्मल कंडीशन रे किंतु जेहेतु एडिसन्स डिजीज अच्छी एडिसन्स डिजीज माने एल्डोस्टेरोन कम अच्छी बोली कहले ना तो ये बे सोडियम को रिटेन करि परिबो ना तो बे पोटेशियम को एक्सक्रीट करि परिबो तो पोटेशियम को रिटेन करि परिबोनी ता माने पोटेशियम लूज हेई जिवो हैला पोटेशियम लूज हेई जिवो तो पोटेशियम लूज हेई की गला बेलो को ए कंडीशन ता हमर हेई जाउची कोन ना हाइपोनाट्रेमिया एपटे हमर पोटेशियम को एक्सक्रीट करिया कथा किंतु पोटेशियम एक्सक्रीट हे परिबोनी पोटेशियम एक्सक्रीट न हे परिबा जोगु पोटेशियम टा रिटेन हे रहइबो बॉडी रे जहा जोगु कि हाइपरनाट्रेमिया कंडीशन टा देखा जिवो सॉरी हाइपरकैलेमिया पोटेशियम कथा कहली ना हाइपरकैलेमिया ठीक अछि तो हाइपरकैलेमिया आउ हाइपोनाट्रेमिया ऑप्शन नंबर बी बुझि पालो डिक्रीज सोडियम एंड इंक्रीज पोटेशियम यस ठीक एया करथुला अंकित वेरी नाइस तो ए जिंसडा से जो करूथुला एबे तार डेफिशिएंसी हे जबा जो ए फंक्शनिंग न करि पारिले तार उल्टा इफेक्ट बॉडी रे पड़िबो तो मनीषा बी हे जबा करेक्ट आंसर बी मौमिता very nice next question number 36 immediately after delivery the uterus becomes firm and globular and the placenta separate which mechanism is primarily responsible for the placental separation cervical dilatation increased fetal movement uterine contraction and retraction relaxation of the myometrium 36 delivery pore kon he jibo हाँ डेलीवरी पर जब आम प्लासेंटा रो रिमूवल हम है प्लासेंटा रो रिमूवल हम ठीक तो से आमर यूट्राइन कंट्राक्शन रिट्राक्शन होगा आरंभ हो से इन्वोल्यूशन होगा आरंभ हो धीरे धीरे ठीक अच्छे इट इज सी नेक्स्ट व्हिच डिनोमिनेटर इज यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो को डिनोमिनेटर यूज करा जाउची टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज नंबर ऑफ द लाइफ बर्थ्स ना टोटल पॉपुलेशन गुड मॉर्निंग सागरिका को डिनोमिनेटर यूज होची जतबेले आमे देखुचे मैटरनल मोर्टालिटी रेट केमिति कैलकुलेट होची एमएमआर इट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड तो आइडिया में लाइफ बर्थ को एज डिनोमिनेटर नोचे नंबर ऑफ लाइफ बर्थ एज डिनोमिनेटर यस
Next, question number 38. Which change occurs during normal inspiration? Diaphragm relaxes and moves upward. Intrapulmonary pressure rises over the atmospheric pressure. Thoracic volume increases and intrapulmonary pressure falls. External intercostal muscle relaxes. Inspiration time re. Inspiration time रे इंस्पायर करूचे बोली कहले इंस्पायर करूचे बोली कहले माने आमे कौन करूचे एयर टाको इनहेल करूचे एयर टाको भीतर को नौचे एयर को भीतर नेले आमर जो थोरासिक कैविटी अछि थोरासिक कैविटी रे आमर वॉल्यूम डा इंक्रीज हे जिवो थोरासिक कैविटी रे वॉल्यूम डा इंक्रीज हे जिवो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आमर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मध्ये माने माने लंग्स भीतर जो प्रेशर थिला सेटा भी कमी जिवो ठीक तो थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज हला बेलको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मध्ये आमर फॉल हबो हैला स्निग्धा yes Anita Babita next a patient with increased intracranial pressure is being monitored which finding require immediate intervention mild headache increasing level of consciousness bradycardia with widening pulse pressure and irregular respirations mild nausea question number 39 yes question number 39 कौन देखा जाउची एठी कौन देखा ये ना इंट्राक्राइनियल प्रेशर इंक्रीज होइछि कौन है देखा जीवो ये यस ब्राडिकार्डिया विथ वाइडनिंग पल्स एंड इरेगुलर रेस्पिरेशंस हैला तो ए जिंसडा को हमर कौन को होछि कशिंग ट्रायड बोली को जाउछि कौन इंक्लूडेड रहउछि एथरे वाइडनिंग ब्लड प्रेशर सॉरी वाइडनिंग पल्स प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन जोड़ा को कहा जाउची हाइपरटेंशन आउ गोटे कौन रहिला ब्रैडिकार्डिया हैला आउ कौन रहिला इरेगुलर रेस्पिरेशन बा इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स ठीक अछि हैला सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 A postpartum woman suddenly developed dyspnea, chest pain and tachycardia. Pulmonary embolism is suspected. What is the priority nursing action? Encourage ambulation, place the woman in high Fowler's position and administer the oxygen as prescribed. Massage the affected leg. Encourage the oral fluids immediately. मैम मार्कर ओ मार्कर टिके बड़ करिबी कि अच्छा अच्छा हाँ हो ठीक अछि हो कौन हम ये चेस्ट पेन डिस्पनिया पोस्टपार्टम वुमेन रो ये सब कंडीशंस तो देखा जाउची तो से जगह में कौन करबा वी नीड टू प्लेस द वुमेन इन हाई फाउलर्स पोजीशन एंड एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड हैला ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करबा जेमिति प्रिस्क्राइब करा जाइथिबो आउ ताको हाई फाउलर्स पोजीशन रे ताको प्लेस करके रखा जिवो नेक्स्ट आसा क्वेश्चन नंबर 41 a screening test for a disease has very high sensitivity high अछि but low relatively low specificity relatively low specificity high sensitivity अछि किंतु low specificity अछि which outcome is most likely increased false positive result increased false negative result increased true negative results only decreased detection of the actual cases question number 41 question number 41 sensitivity में कौन measure करछि sensitivity measure एया करछि जे test is the test ability to correctly identify those with the disease हैला sensitivity एडा measure करछि कोन ना tests ability to correctly identify those with the disease तो एडी कौन होची ना मिनिमाइज होची कौन मिनिमाइज होची false negative उडा सब एडी मिनिमाइज होची हैला whereas specificity कौन मेजर करची ये मेजर करची measure the ability to correctly identify those without the disease ठीक अछि तो एडी हमर कोन होची क्रिएट टू तो एडा हमर कोन एंटागोनिस्ट हे जेबा जो increased false positive result increased
फॉल्स पॉजिटिव केसेस इंक्रीज हो जाउची यस यस ममिता बी बी हबनी वर्षा मेघना ए हबो आंसर ए हबो आंसर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट गुडा इंक्रीज हो जाउची ये हमर मिनिमाइज करला बेलगु ये इंक्रीज कर दोची ना increased false positive results will be the correct answer. Next, which part of the cardiac conduction system normally has the highest intrinsic rate and therefore act as the primary pacemaker? Bundle of is sinoatrial node, Purkinje fiber, atrioventricular node. Highest intrinsic rate कहाँ रहो? It is yes it is SA node very nice B SA node ठीक आउ जदि आमे एडा होचे हमर बंडल नोडल टिश्यूज गुडाको SA node रो ओरिजिनेट होची जो इंट्रिंसिक पेसमेकर भला काम करची 60 to 100 बीट पर मिनिट रे ये जनरेट करची तापरे सी जाउची सिग्नल टा AV नोड पाखकू तापरे जाउची बंडल ऑफ हिस को जोडा कि हमर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रे प्रेजेंट अछि तापरे जाउची से कोठी की तापरे जाउची से हमर पुर्किंजे फाइबर्स को पुर्किंजे फाइबर्स को ठीक अच्छे तो ये है हमारा नोडल टिश्यूज सीक्वेंस टा नेक्स्ट अ पेशेंट सस्टेन्स अ केमिकल बॉन्ड टू द स्किन फ्रॉम एन अननोन corrosive substance what is the most appropriate immediate first aid measure कौन apply an alkaline substance to neutralize the chemical cover the area with an occlusive dressing irrigate the affected area generously with running water rub the affected area to remove the chemical हैला कौन सी कोरोसिव सब्सटेंस द्वारा बर्न देखा जाउची बोली कहले ए जगह रे हमें कौन सी अल्कलाइन सब्सटेंस अप्लाई करबानी कि कवर करबानी से एरिया टाकू वी नीड टू इरिगेट द अफेक्टेड एरिया जनरसली विथ रनिंग वाटर आउ रबिंग तो जमारू भी एडा हमें अवॉइड करबा दरकार हैला रबिंग हमें अवॉइड करबा दरकार यस यस अंकित वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन a patient with severe liver disease develop hepatic encephalopathy which dietary modification may be required during the acute management unrestricted high protein intake temporary reduction of the protein intake as prescribed complete elimination of the carbohydrates high fat ketogenic diet question number 44 हेपाटिक एनसेफेलोपैथी जब देखा जाउची ताहाले वी नीड टू टेम्परेरीली रिड्यूस द प्रोटीन इंटेक एज प्रेस्क्राइब जेमिति प्रेस्क्रिप्शन दिया है से अनुसार हमें प्रोटीन इंटेक टाकू रिड्यूस करिया पड़िबो रिस्ट्रिक्ट करिया पड़िबो एज अ रिजल्ट काहे कि ना हमर हेपाटिक एनसेफेलोपैथी कंडीशन ता बॉडी रे डेवलप हिकरी अछि हैला next question number 45 a patient receiving unfractionated heparin develop a significant fall in the platelet count after several days of the therapy which complication should the nurse suspect disseminated intravascular coagulation hemophilia thrombotic thrombocytopenia purpura heparin induced thrombocytopenia कहाँ हबा प्लेटलेट काउंट बहुत significantly fall ହେଇची ठीक heparin देगिरी ताको डेवलप करा ହେଇची तो heparin induced thrombocytopenia will be the correct answer हेठी हैला yes hepatic problem जोगु हमें प्रोटीन कंज्यूम करबानी ममिता heparin induced thrombocytopenia माने कोन जतबे प्लेटलेट काउंट कमी जिवो से कंडीशन टाको thrombocytopenia कहै छै Next, a woman at 32 weeks of gestation present with painful vaginal bleeding, uterine tenderness and a rigid uterus. Which condition is most likely? Abruptio placentae, placenta previa, vasa previa, cervical polyp. एडा आमे आ पूर्वरु करि सारथिले ठीक आ पूर्वरु करि सारथिले इट इज abruptio placentae ना इट इज abruptio placentae तार पूरा उल्टा जिंसडा कोन इट इज प्लासेंटा प्रेविया तार पूरा उल्टाटा होची प्लासेंटा प्रेविया सेही हमरो ब्लीडिंग देखा जिवो ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग देखा जिवो ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग देखा जिवो किंतु कोन थिबो सेडा एडा हमरो पेनलेस थिबो आ एडी यूटेरसटा सॉफ्ट थिबो ठीक अछि रिजिड न थिबो उल्टा नेक्स्ट Question number 47. In epidemiology, the period between exposure to an infectious agent and the appearance of the first symptom is known as generation time, incubation period, communicable period, serial interval. जतबेले हमर कोन ना इन्फेक्शियस एजेंट को एक्सपोज हेले ता परे हमर जो फर्स्ट सिम्पटम टा अपीयर हैला सेडा होची हमर इंक्यूबेशन पीरियड हैला इंक्यूबेशन पीरियड
ठीक तो एरिया आमर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर व्हिच नेफ्रॉन सेगमेंट इज प्राइमरीली रिस्पांसिबल फॉर रीअब्सॉर्बिंग द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम एंड वाटर collecting that distal convoluted tubule proximal convoluted tubule na thick ascending limb कौन हम करेक्ट आंसर एडी क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 इट इज PCT हैला रीअब्जॉर्प्शन जो मेजर रीअब्जॉर्प्शन हमर PCT रे होची यूरिन फॉर्मेशन रो जदी हमें तीनटा स्टेप देखिबा ना ताले फर्स्ट स्टेप हैला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेकंड स्टेप हैला रीअब्जॉर्प्शन थर्ड स्टेप हैला सिक्रेशन ठीक अछि तो एडी यूरिन फॉर्मेशन रे फर्स्ट स्टेप टा होची अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जोटा की ग्लोमेरुलस रे देखा जाउची बा आउ वुमेन्स कैप्सूल रे देखा जाउची ठीक नेक्स्ट होची ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जोटा की PCT रे देखा जाउची थर्ड होची ट्यूबुलर सिक्रेशन जोटा की लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट रे बा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रे देखा जाउची हैला नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन रेस्क्यूड फ्रॉम ड्राउनिंग इज अनकॉन्शियस बट हैज स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग आफ्टर एंश्योरिंग एयरवे पेटेंसी द अप्रोप्रिएट इमीडिएट पोजीशन व्हाइल अवेटिंग फर्दर केयर इज रिकवरी पोजीशन विथ कंटिन्यूड मॉनिटरिंग ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन prone position with pressure over the abdomen sitting position question number 49 question number 49 it is we need to place them in the recovery position with continued monitoring हैला ब्रीदिंग वगैरह प्रॉब्लम अच्छी स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ठीक अच्छी हैला ड्राउन कर जाइथिला अनकॉन्शियस अच्छी बट बाकी ब्रीदिंग ठीक अच्छी तो सेति पई बोली एयरवे पेटेंसी को चेक करिया पई बोली वी नीड टू पोजीशन देम इन द रिकवरी पोजीशन एंड व्हाइल कंटीन्यूअसली मॉनिटर करबा सेमानकर एयरवे को नेक्स्ट व्हिच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड सेवरल अदर क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन ई विटामिन सी विटामिन B6 विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर माने कौन क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करि परिबो विटामिन के ठीक अछि फैक्टर 7 9 आउ 10 ए तीनटा फैक्टर को से एक्टिवेट करि परिबो आ एक्टिवेट करिके हमर कोन करिवो ना प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट करिवो जदि हमें क्लॉटिंग रो जो पूरा सीक्वेंस ता देखिबा बा क्लॉटिंग जिंसटा को बुझिबा ताहले जो जगह रे इंजुरी हेची ए गोटे कैस्केड ऑफ इवेंटा सेडी हमर गोटे कंपोनेंट रिलीज होबो ताको कहै जाउची थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन करछि से रिलीज करछि गोटे एंजाइम डे ताको कहै जाउची थ्रोम्बोकाइनेज आ ए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम डा हमर ब्लड रे थिबा प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करुछि इनटू थ्रोम्बिन आ ए थ्रोम्बिन डा पुणी हमर फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट करुछि इनटू फिब्रिन ठीक अच्छे एटा आमर कौन कर ना से इंजुरी रो साइड रे एमिति जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स गुड़ाक सब फॉर्म करिवो सो दैट आमर इंजुरी प्रिवेंट हो पारिबो हैला तो ये हो गला आमर कौन ना क्लॉटिंग पई बोली इंपोर्टेंट फैक्टर्स ए फैक्टर गुड़ाक एसेंशियल आमर क्लॉटिंग पई बोली आ जदी इंपोर्टेंट विटामिन जोड़ा दरकार आमर क्लॉटिंग पई बोली हेला कौन हबो सेटा विटामिन के इंपोर्टेंट आयरन डा कौन इट इज कैल्शियम आयरन ठीक अच्छे आ इंपोर्टेंट सेल कथा जदि कहबा इट इज प्लेटलेट्स हैला वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 A patient with diabetic ketoacidosis has a blood glucose of 480 mg per dl and severe dehydration. Which intervention is generally prioritized initially? Intravenous isotonic fluid replacement, oral carbohydrate administration, immediate potassium restriction, subcutaneous long-acting insulin only. Question number 51. It is कौन करिबा जगह इंट्रावेनस आइसोटोनिक फ्लूइड रिप्लेसमेंट इंट्रावेनस आइसोटोनिक फ्लूइड रिप्लेसमेंट एडी हेजिबा हमर करेक्ट आंसर ए अंकित मामाली रितांजलि सुभस्मिता वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर 52 a woman receiving oxytocin during labor develop contractions occurring every 1 minute and lasting 90 seconds what is the priority nursing action increase the oxytocin infusion increase the ambulation stop or reduce the oxytocin and assess the fetal status administer an additional uterotonic drug
ऑक्सीटोसिन रिसीव करछि एंड डेवलप करछि कंट्राक्शन केते मिनिट रे एवरी 1 मिनिट रे 90 सेकेंड पई बोली तार कंट्राक्शन उडा को देखा जाउछि ठीक अछि तो एठी हमर यूट्राइन टाकिसिस्टोल कंडीशन दा हमर आरंभ हो गलानी हैला जदि कंट्राक्शन हमर 1 मिनिट रे 90 सेकेंड जाय लास्ट करछि बोली कहले सेटा हाइपर स्टिमुलेट कर सारलानी यूटेरस को जोडा को कि टाकिसिस्टोल बोली कहवा जाउछि एटा जगो कोन हबो ना ब्लड फ्लो दा प्लासेंटा को रेस्ट्रिक्ट हेकिरी फिटल रो हाइपोक्सिया कंडीशन दा हमर जनरेट हेई परिबो हैला जनरेट हेई परिबो ए जो 1 मिनिट रे 90 सेकेंड्स को लास्ट करूची एटा होची हमर यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन जोटा कि टाकिसिस्टोल कंडीशन को सी इनिशिएट करूची हैला टाकिसिस्टोल कंडीशन को इनिशिएट करूची आ टाकिसिस्टोल कंडीशन को इनिशिएट करले प्लासेंटा को कोन हबो ऑक्सीजन डिलीवरी इज restricted तो आपको ऑक्सीजन डिलीवरी रेस्ट्रिक्ट हेगला बोली कहले वी शुड बी स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग द ऑक्सीटोसिन एंड असेस द फीटल स्टेटस जोटा कि हमर जदी ऑक्सीजन डिलीवरी रिड्यूस हैला बोली कहले फीटस रो हाइपोक्सिया कंडीशन या फिर फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन हमर देखा जाई पारे तो आमे यथाशीघ्र हबो ताको आमे बंद करिगिरी फीटस रो कंडीशन टाको असेस करबा दरकार हैला फीटस रो कंडीशन टाको असेस करबा दरकार ठीक yes next question asa 53 which type of surveillance is most useful when health authorities actively search for cases rather than waiting for routine report passive surveillance active surveillance sentinel surveillance syndromic surveillance actively search करछंदी cases को ऑक्सीटोसिन आरंभ हो सारानी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग तो वी नीड टू स्टॉप द ऑक्सीटोसिन यस हमर एडी हैला एक्टिव सर्वेलेंस ठीक अछि जोडी की हेल्थ अथॉरिटीज निजे बुली बुली गिरी केसेस को कलेक्ट करचंदी पैसिव सर्वेलेंस रे कोन करिवे दे वेट फॉर द हेल्थ अथॉरिटीज हेल्थ हमर जते की भी सब माने कम्युनिटीज अछि सेइडू हमर केसेस आसीबा पई बोली वेट करिबाडा सेइडू केस आसेला पर ताको एक्सेप्ट करिबाडा सेइडा हेगला पैसिव सर्वेलेंस जते बेले एक्टिव सर्वेलेंस रो माने होउची जते बेले से माने जगह जगह जाईगिरी बुल्ली की से माने खोजिगिरी नेकी आसीबे रिपोर्ट्स उडा को सब नेकी आसीबे केसेस को नेकी आसीबे सेटा हला एक्टिव सर्वेलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 which hormone promotes sodium reabsorption and potassium secretion primarily in the distal nephron aldosterone insulin parathyroid hormone arterial natriuretic peptide हमें देखिथिले आरो हैला अल्डोस्टेरोन हबो करेक्ट आंसर से कोन करूची ना पोटासियम सोडियम रो रीअब्जॉर्प्शन करूची आ पोटासियम रो सिक्रेशन करूची ता माने सोडियम को ब्लड रे बढ़ौची आ पोटासियम को ब्लड रो कम होची जार डेफिशिएंसी रे कि एडिशंस डिजीज हेथिला आ जदी एडिशंस डिजीज होची बोली कहिले आ पोटास सोडियम को आ सी कोन करबो आ ब्लड रे बढ़े परिबनी तो ब्लड रे सोडियम डा कमी जिवो जहा जोको कि हाइपो नाट्रेमिया कंडीशन डा देखा जिवो आउ पोटासियम रो लेवल को कम होथला किंतु एबे कमे भी परिबा कमी न परिबा जो एबे पोटासियम लेवल डा बढ़ी जिवो ता जगो कि हाइपर कैलेमिया सिचुएशन डा देखा जाउथला आउ ए जो कंडीशन डा हमर एडिशंस डिजीज रे देखा जाय आउ एडिशंस डिजीज रे कोन होची ना it occurs due to the deficiency of aldosterone hela next question number 55 a patient develop an acute asthma attack and is severely breathless but conscious but conscious which first aid approach is most appropriate make the patient lie completely flat encourage slow breathing while keeping the patient upright and assist with prescribed relief or medication give solid food immediately encourage vigorous exercise to improve the ventilation yes question number 55 everyone B yes we need to encourage slow breathing while keeping the patient upright and assist with the prescribed reliever medication nice which finding is most suggestive of the vitamin A deficiency vitamin A जोटा की हो जे हमर कोन retinol and this vitamin is responsible for vision
दिस विटामिन इज रिस्पांसिबल फॉर विजन तो एटा जते बेले हमर डेफिशिएंसी हे जिवो बॉडी रे ना ताहले नाइट ब्लाइंडनेस देखा जिवो ठीक अछि नाइट ब्लाइंडनेस या आउ कोन देखा जाई पारे जेरोफ्थैल्मिया ठीक अछि जेरोफ्थैल्मिया होची ड्राइनेस इन द आईज ड्राइनेस इन द आईज ठीक कॉर्नियल ड्राइनेस देखा जिवो A patient with a chest tube develops sudden absence of drainage, increasing dyspnea and decreased breath sounds. What should the nurse do first? Clamp the chest tube routinely, remove the chest tube, assess the system for obstruction or disconnection and assess the patient immediately. Place the drainage system above the chest level. We need to assess the system for obstruction or disconnection and assess the patient immediately है obstruction by disconnection जिनसटा को हमें डिटेक्ट करिवा फर्स्ट आ से अकॉर्डिंगली असेसमेंट ता मध्ये करा जिवो नेक्स्ट which finding during the pregnancy is most suggestive of the placental insufficiency excessive fetal growth increased maternal appetite a fundal height appropriate for gestational age fetal growth restriction with abnormal doppler findings Yes. C. Lucky. कोड़ा कौच सी 58 D सौदा बिना विमर्शी हाँ कार्टून ठीक अच्छी पूजा ठीक fetal growth restriction with abnormal doppler finding जति placenta insufficient अछि ताहाले fetal growth रा हमर restrict हे जिवो जोडा को कि हमर FGR बोली कुहा जाउछि fetal growth restriction ता सहित हमर abnormal doppler finding मध्य रहिबो next which measure describe the portion of the proportion of the individual with a disease who die from that disease during a specified period case fatality rate infant mortality rate crude death rate proportional mortality rate कौन अब question number 59 Yes. Question number 59. It is case fatality rate. है ना? Case fatality rate ता हमर कौन measure करछि माने तार definition ता कौन हबो ना proportion of individuals diagnosed with specific disease who die from that disease ठीक अछि तो एटा गोटे पर्टिकुलर डायग्नोस टाइम पीरियड भीतर हम एटा को मेजर करछे केस फैटालिटी रेट हियर विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट Question number 60. A patient develop a lesion in the Broca's area. Which deficit is most likely? Inability to understand the spoken language, inability to produce fluent speech despite relatively preserved comprehension, complete loss of vision, loss of balance and coordination. Question number 60. Yes, very good Ankit. Very nice. ठीक अछि. Question number 60. एटा हे जबा कोन जेहेतु हमर ब्रोकाज एरिया टा हैला ब्रोकाज एरिया टा कोन करछि हमर स्पीच पई बोली रिस्पांसिबल तो जदी हमर लेजियन ब्रोकाज एरिया रे देखा जाउछि ताहाले वी विल बी अनेबल टू प्रोड्यूस फ्लुएंट स्पीच डिस्पाइट रिलेटिवली प्रिजर्व्ड कॉम्प्रिहेंशन माने कॉम्प्रिहेंशन तार लैंग्वेज बैरियर किछ कोनसे नाही किंतु सेही जाग्या रे प्रॉब्लम हेबा जकू से जिंसटा को एबल प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करि पारनी ठीक अछि अफेजिया कंडीशन जोडा को कहआ जाउछि हमर लैंग्वेज रो फ्लुएंट स्पीच हमर प्रोड्यूस हे परिबनी दैट इज अफेजिया कंडीशन ब्रोकाज एरिया रे हमर अफेजिया देखा जिवो नेक्स्ट A patient with a suspected pelvic fracture is pale, tachycardic and hypotensive. The priority concern is hypoglycemia, neurogenic bladder, internal hemorrhage and shock, localized infection. Question number 61. Excessive aphasia, yes. 61. Pale skin अछि, tachycardia अछि, आउ हाइपोटेंसिव अछि ता माने एटा को जिंस को हमर इंडिकेट करछि इंटरनल हेमरेज को इंडिकेट करछि शॉक को इंडिकेट करछि हैला इंटरनल हेमरेज बा शॉक को इंडिकेट करछि ए कंडीशन ना डन
Yes, yes, C, very nice. 2, quiz 62. Which dietary instruction is most appropriate for a patient with chronic kidney disease and hyperkalemia? Increase banana and citrus fruits, restrict the high potassium food as prescribed, increase the salt substitutes containing the potassium, increase the dried fruits. कौन होगा question number 62? ऑलरेडी कौन है अप्रोप्रिएट सीकेडी अच्छी आउ ता संगे हाइपरकालेमिया 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 माने कौन हाई लेवल ऑफ पोटेशियम हाई पोटेशियम लेवल ए लेवल रे ऑलरेडी पोटेशियम लेवल जोडी अधिका अछि सेडी हमको पोटेशियम रिच फूड उडा खाइबाडा रेस्ट्रिक्ट करिया पड़िबो हैला पोटेशियम रिच फूड उडा खाइबाडा रेस्ट्रिक्ट करिया पड़िबो सो वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट हाई पोटेशियम फूड एज प्रिस्क्राइब्ड. Correct, very good everyone. A patient with a history of myocardial infarction suddenly develops severe dyspnea, hypotension and bilateral pulmonary crackles. Which condition should be suspected? Myocardial infarction जोटा को कि हमर हार्ट अटैक बोली मते कहआ जाउची हार्ट अटैक बोली मते कहआ जाउची ए कंडीशन टा कोन होची ना हार्ट मसल्स becomes deficit of oxygen जहा द्वारा कि कौन देखा जाउची जहा द्वारा कि हमर एठी कौन होची ना हाइपोक्सिया कंडीशन हे गिरी हार्ट मसल्स सब डैमेज हो जाउची हार्ट मसल्स सब डैमेज हो जाउची तो एडा हमर कार्डियोजेनिक शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक न्यूरोजेनिक शॉक ना सेप्टिक शॉक कौन हबो क्वेश्चन नंबर 63 तो ये जे तो हमर हार्ट सहित सब रिलेटेड अछि इट इज कार्डियोजेनिक शॉक यस तरुण अंकित यस मामाली रिजवाना मेघना कार्टून very nice. Question number 64. During fetal monitoring recurrent late decelerations are observed. These are most strongly associated with umbilical cord compression, maternal hyperglycemia, uteroplacental insufficiency, fetal head compression. कौन नंबर 64? recurrent late decelerations are observed. late deceleration काहेंगे observe होची एटा एथि पय हमर देखा जाउची late deceleration हमर एथि पय होची काहेंगे ना हमर vigorous contraction हेबा जगु sufficient oxygen हमर प्लासेंटा को पहुंचुनी as a result of which fetus पाखु मते sufficient oxygen पहुंचुनी हैला and ता जगु fetal hypoxia condition हमर देखा जाय गिरी fetal distress condition मते देखा जाउची ठीक अछि सेटा को हमर decelerations बोली कहवा गला कोन लेट डेसिलेशंस बोली कहवा जाउची कोन होची एडा केस रे ना vigorous contractions जगु oxygen deficiency to the placenta और placenta रे oxygen deficiency हेबा जगु placenta रे oxygen deficiency हेबा जगु fetus को मध्ये oxygen supply हमर restrict हे जाउची and as a result of जेडी कोन होची ना fetal distress आउ कोन hypoxia condition देखा जाउची ठीक अछि and it is uteroplacental insufficiency very good स्वयं अंकित yes सौरभ पूजा तनुज लकी next which intervention represent the primordial prevention screening of the hypertension preventing the children from adopting unhealthy lifestyle pattern rehabilitation after the myocardial infarction treatment of the established hypertension कौन हबो प्राइमोर्डियल इन्फेक्शन हमर ए स्टेज टा प्रिवेंशन रो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ना हमर से स्टेज टा प्रिवेंशन रो जोडी कि हमर डिजीज न हेबा पूर्व हमें नेसेसरी एक्शन नोचे टू प्रिवेंट दैट डिजीज हैला ताको प्रिवेंट करिया पई बोली हमें लाइफस्टाइल पैटर्न को हमें हेल्दी करि परिबा अवेयरनेस स्प्रेड करि परिबा या फिर हमें कहि परिबा कि हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट करिबा जे डिजीज टा हम पाखो को जेमिति जेते कम हम से कम कंटाक्ट आसे चेष्टा करबा सेटा होचे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन आ एडा हमर केमिति सप्लाई हे परिबो बा एडा हमको केमिति दिया जाई परिबो थ्रू लाइफस्टाइल हैबिट्स
healthy lifestyles आउ education awareness spreading the pros and cons of the disease आउ ताको केमी स्प्रेड करके केमी ताको आमे बंचिके रही परिबा से द्वारा हमर हे परिबा प्राइमोडियल प्रिवेंशन जोड़ा को कि कहा जाउची ऑप्शन नंबर बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर am I right everyone yes prevention of the risk factors yes Rupashri Tanuj ठीक अछि next question number 66 which plasma protein contribute most significantly to the maintenance of the colloidal osmotic pressure colloidal osmotic pressure plasma protein भितर हमर ए तीनटा जाक प्रोटीन हमर प्लाज्मा रे प्रेजेंट अछि प्रोथ्रोम्बिन हमर ब्लड रे प्रेजेंट थाए लिवर सिंथेसाइज हे कि से ब्लड रे हमर इनएक्टिव फॉर्म रे प्रेजेंट थाए एटा मते गुडा हमर फैक्टर टा ही हैला बाकी एटा गुडा फैक्टर टा एडा सब प्रोटीन्स उडागो ए तीनटा होछि प्रोटीन्स उडागो फिब्रिनोजेन टा हमर ब्लड क्लॉटिंग रो फैक्टर टा it is responsible for blood clotting ठीक globulin is responsible for defense it is responsible for defense albumin is responsible for osmotic balance ठीक तो एडी हमरा क्वेश्चन पचारछि कोन ऑस्मोटिक प्रेशर को के मेंटेन करछि ऑस्मोटिक प्रेशर माने कोन बॉडी रे सोडियम और वाटर रो कंसंट्रेशन टा हैला सेडा हमर एल्बुमिन डिसाइड करछि हैला अंशुमन प्रतीक्षा वेरी नाइस 67 a person is found unconscious after an electrical injury before touching the victim the rescuer should first pour water over the victim ensure the electrical source is disconnected safely immediately pull the victim away with the bare hands and give oral fluids pour water over the victim already ताको करेंट मारी अछि हैला माने इमिति दुर्दशा अवस्था जे आमे पाको पाउरे पानी पकेबा होधरे माने गोटे ऑप्शन इमिति थाउची कौन हबो को एटा तो हबनी जणा पड़ी गला ना एटा तो हबनी वी नीड टू एंश्योर दैट द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज डिस्कनेक्टेड सेफली हैला सी ऑलरेडी सी लागि थिबो ताकू जगी हम तमे टाणियो बोली करे तमे भी सेडी एमती लागि रहि जिवो हैला तो एटा तो जमा भी करा जिवो कथा नुहे हैला ओरल फ्लूइड्स मते देबानी आमे से जगह रे वी नीड टू फर्स्ट एंश्योर कि इलेक्ट्रिकल सोर्स टा हमरो डिस्कनेक्ट हेछि सेफली तापर जगी हमरो कोन नेक्स्ट स्टेप करा जिवो ठीक अछि हां सी ऑलरेडी करंट मारी गई अछि हैला ता ऊपर पानी पके दबने की हैला ऑलरेडी तो करंट मारी गई ताको टाणिया गलाडू तमे भी सेडी लागि रहि जिवो हैला तो ए ऑप्शन सुडा तो जम्मा भी हबनी ठीक तो ऑप्शन नंबर 68 ए पे क्वेश्चन आसा 68 हां which amino acid is considered conditionally essential during periods of severe physiological stress such as the critical illness glutamine glycine alanine serine question number 68 एडा कोन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस टाइम रे हां फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस टाइम रे ग्लूटामाइन देबा दरकार जेहेतु एडा हमर नॉन एसेंशियल हैला नॉन एसेंशियल बोली कहले सेडा हमको बाहरु आनिगिरी देबाको पड़िबो व्हाट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हां सेही तो कहूची अंकित हैला से जो वाटर गुड कंडक्टर हैला बेलु से इलेक्ट्रिसिटी लागि कि थिबो तुमको वाटर टा पूरा गुड कंडक्टर हे गेला तमे पूरा एत्ते भलो से कंडक्ट कर दबो जे तापर से आउ से जेमदे कहले स्वाहा पूरा स्वाहा डायरेक्ट तापर तमे तापर इलेक्ट्रिकल तार रे जागी बसथिबो नेक्स्ट a patient with cirrhosis has ascites and peripheral edema which medication is commonly used to promote the diuresis while counteracting the aldosterone mediated sodium retention mannitol spironolactone acetazolamide hydrochlorothiazide only कौन होगा क्वेश्चन नंबर 69 our body is also a good conductor से आराम से कंडक्ट कर दबो से तापर तो जहा हे जिवो राम राम हे जिवो एडी जिवो कोन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर स्पाइरोनोलैक्टोन जेहेतु एडा गोटे हमर पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक टा पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक it directly act as direct ये डायरेक्ट हमर एल्डोस्टेरोन रो एंटागोनिस्टिक रे काम करिवो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हिसाब रे ये काम करिवो ठीक अछि आउ ताहा द्वारा हमर फ्लूइड रिटेंशन को मैनेज करिवो सिरोसिस केस रे हैला ता द्वारा डायरेक्ट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट हेगिरी मैनेज फ्लूइड रिटेंशन इन सिरोसिस हैला ऑप्शन नंबर बी स्पाइरोनोलैक्टोन हिजबो करेक्ट आंसर एटी नेक्स्ट
A woman with postpartum hemorrhage continue to bleed despite uterine massage and the uterus remains boggy. Which condition is most likely? Uterine atony, cervical cancer, ectopic pregnancy, placenta previa. Hmm. बॉगी यूटरस देखा जाउची पोस्टपार्टम हेमरेज रो मोस्ट कॉमन कॉज ए जो बॉगी यूटरस टा एडा हमर यूट्राइन अटोनी को इंडिकेट करची यूट्राइन अटोनी को इंडिकेट करूची हैला यस next question number 71 a community health nurse wants to identify household requiring immediate intervention during a cholera outbreak which activity is most appropriate conducting a case search and mapping affected households waiting for annual health statistics restricting the surveillance to hospital admissions conducting only a nutritional survey question number 71 hmm. yes again name Puspanjali okay okay it is conducting a case search and mapping the affected households conducting a case search and mapping affected households next question number 72 which physiological change occurs immediately after birth that contribute to the closure of the foramen ovale जोड़ा कि हमर होल डा गोटे थाउची कोडी इंटर आट्रियल सेप्टम रे जोटा अछि ठीक अछि बर्थ पर को जिनसडा से फोरामेन ओभेल क्लोजर को से इंडिकेट करछि इंक्रीज्ड पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर फॉलोइंग द इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड राइट आर्टेरियल प्रेशर कौन हबो फोरामेन ओभेल टा क्लोज हे गला पर तार जो स्कार टा रहउछि से स्कार टा को कहा जाउछि कोन फोसा ओभालिस ठीक अछि एडा हमर क्लोजर हे गला परे तो एडा कम पे किमिति क्लोज होछि फोरामेन ओभल टा क्लोज जो होछि इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड लेफ्ट आर्टेरियल प्रेशर फॉलोइंग द इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर इट सी होबा करेक्ट आंसर यस पुष्पांजलि कार्टून next a patient with heart stroke is confused has a very high body temperature and hot skin what is the priority first aid intervention give a high protein meal rapidly initiate cooling measure while arranging the emergency medical care cover the patient with thick blankets encourage the strenuous exercise question number 73 73 संगे संगे कौन करवा हमें we need to rapidly initiate the cooling measures while arranging the emergency medical care हैला संगे संगे इनिशिएट करबा कूलिंग मेजर आउ जेहेतु एडा गोटे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन टा हमर हीट स्ट्रोक हेबाडा गोटे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन तो सेति पई बोली एठी हमें सेही जिंसडा देबा हैला थिक ब्लैंकेट रे ऑलरेडी तो हीट स्ट्रोक रे से मल्लानी लोकडा पुनी आउ थरे ताकू हमें गरम ब्लैंकेट देगी रे हा जो पुण्य हमें अजीबा कहयाउ नै हीट स्ट्रोक हेछि ताकू स्ट्रेनस एक्सरसाइज करिया पई कहबा भगवान प्रोटीन मील देबा बांती करी से अवस्था हे जिवो एठी हैला तो ए जिंस न करी we need to rapidly initiate the cooling measure while arranging the emergency medical cares next which anthropometric measurement is particularly useful for assessing the acute malnutrition in children aged 6 to 59 months mild upper arm circumference head circumference alone chest circumference na sitting height hmm हाँ हाँ स्वेटिंग एब्सेंट था कोड़ा कोच की कोड़ा कोच लास्ट वाला ऑप्शन टा इंटरेस्टिंग अछि ना हाँ से हाँ को 74 इट इज माइल्ड अपर आर्म सर्कमफेरेंस MUAC जोड़ा दिया होछि हैला सेटा देखि कि हमें सेटा को असेस कर परिबा नेक्स्ट अ पेशेंट विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डेवलप सीवियर hypocalcemia which clinical manifestation should the nurse monitor for flaccid paralysis only tetany and positive neuromuscular irritability signs severe bradycardia with hyperkalemia polyuria due to hypercalcemia
Yes, question number 25 sorry 75 hypocalcemia माने blood calcium level is low, blood calcium level is low, तो blood calcium level low रहिले कौन हबो tetany with positive neuromuscular irritability signs हैला positive neuromuscular irritability signs option number B है correct answer 76 a postpartum woman complain of unilateral calf pain warmth and swelling what is the most appropriate nursing action massage the calf vigorously encourage prolonged walking apply deep heat and ambulate keep the patient at rest and notify the healthcare provider about the suspected DVT कौन हम आमर एडी जो काफ पेन वार्म ता स्वेलिंग हेबा जोगु आमर यूनिलेटरल काफ पेन वार्म ता स्वेलिंग हेबा जोगु डीबीटी आमर असाइड माने डीबीटी गोटे सिग्नल हे पारे डीबीटी कोन डीप वेन थ्रोम्बोसिस हैला जेतु ए सब कंडीशंस जोगु डीप वेन थ्रोम्बोसिस हमें सस्पेक्ट करचे तो सेथि पई बोली we need to keep the patient at rest and notify the healthcare provider about the suspected DVT हैला suspected DVT next question number 77 which vaccine characteristic is most important for achieving the herd immunity against a highly contagious disease high vaccine effectiveness in the preventing transmission high cost of vaccine long administration time requirement for hospitalization after the vaccine कौन हम वैक्सीन आमर जो दिया जाउची हर्ड इम्यूनिटी को आमे किमिदी गोटे माने कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम कौन हर्ड इम्यूनिटी भितर गुड मॉर्निंग इप्सिता हर्ड इम्यूनिटी भितर आमर कोचे कि आमर जेतिकी अमाउंट रो पॉपुलेशन जेतिकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बा इंडिविजुअल जेतिकी नंबर ऑफ प्रेजेंट अछंती गोटे पर्टिकुलर एरिया रे से भितरु जदि आमर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर बीइंग वैक्सीनेटेड ना आउ जेतिकी स्मॉलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो माने कि वैक्सीनेशन पाई नाहंती बा सेमानो को इन्फेक्शन हेनी सेमाने ऑटोमेटिकली वैक्सीनेटेड हो जाउछंदी या फिर ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाउछंदी बा ऑटोमेटिकली सेफ हो जाउछंदी से पर्टिकुलर डिजीज द्वारा बिकॉज़ दे आर नॉट सराउंडेड बाय द पीपल्स अराउंड देम माने सेमान को सराउंडिंग रे सेफ पीपल अछंदी सेफ लोक अछंदी सेमान इन्फेक्शन होबनी तो ट्रांसमिशन रो साइकिल दा ब्रेक हो जाउछि ना से जगह रे हैला तो से ट्रांसमिशन रो साइकिल दा ब्रेक हो जिबा जोगु हमर हर्ड इम्यूनिटी दा गोटे हेल्पफुल सोर्स हो जाउछि फॉर स्प्रेडिंग द इम्यूनाइजेशन जो कोचा में हैला हाफ पॉपुलेशन को कवरेज करेगा यस अंकित पूरा सुपर से प्रिपरेशन पूरा प्रो लेवल रे चलची ओ ठीक अछि वेरी नाइस प्रिपरेशन समथि हेबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच रेस्पिरेटरी चेंज इज एक्सपेक्टेड व्हेन आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइजेस डिक्रीज्ड वेंटिलेशन इंक्रीज्ड वेंटिलेशन थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर्स कंप्लीट इनहिबिशन ऑफ द कीमोरिसेप्टर्स इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द CSF क्वेश्चन नंबर 78 स्लो हो बेले बेले एबे ठीक है हाँ ना ना फेवरेट बॉय किसी नहीं समस्ते फेवरेट समस्ते प्रिपेयर करछो हैला समस्ते भल्ला से प्रिपेयर करछो यस कौन हम इंक्रीज वेंटिलेशन थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैला रेस्पिरेटरी चेंज एक्सपेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइज केतडा हम हां इंक्रीज वेंटिलेशन थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर्स नेक्स्ट 79 a patient with Addisonian crisis develop severe hypotension hyponatremia and hyperkalemia which treatment should the nurse anticipate yes it is IV corticosteroid with isotonic fluid correction of electrolyte abnormalities fluid restriction and potassium supplementation insulin infusion alone administration of thyroid hormone as the sole treatment एडिसोनियन क्राइसिस रे हमर ए जो कंडीशंस उडा सब देखा जाउची हैला ए जो कंडीशंस उडा सब देखा जाउची से केस रे वी नीड टू माने आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड विथ आइसोटोनिक फ्लूइड एंड करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटीज जेतो एडिसोनियन क्राइसिस जोगो हमर जो सोडियम और पोटेशियम रो बॉडी रे बैलेंस ता हमर डिस्टर्ब हो जाउची हैला एबे ठीक आसुची
स्वयं नहीं नहीं लक्ष्मी आयशा वॉइस एबे ठीक आसिला बी हबो कार्टून लकी यस कोन बी हबो जे हाइपोनाट्रेमिया अच्छी कंडीशन हाइपर कैलेमिया अच्छी ताको ऑलरेडी हाइपर कैलेमिया अच्छी ताको पुणी आउथरे मु पोटेशियम सप्लाई देबी की आउ थोड़ी पोटेशियम सप्लाई देबी हां आज इवनिंग रे क्लास हबनी सागर पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दिया जीवनी खाली इंसुलिन देगिरी अलोन आमे कर परिबनी थायराइड हार्मोन रो कोनोसी भी रोल नहीं हला आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड विथ आइसोटोनिक फ्लूइड एंड करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट abnormalities विल बी द करेक्ट आंसर हला नर्स एंटीसिपेट लिखि जी कोन हला Addisonian crisis develops severe hypotension, hyponatremia, hyperkalemia. Why? Which treatment should the nurse anticipate? हाँ, हाँ, तो कौन हला? अरे ठीक अच्छे जे ए हबो बी हबोनी देखो हाँ माइकटा खसीगले भॉइस आसुनी एबे मु सेट कर दउछि देखिलो हाइपोटेंशन बीपी लो अछि हाइपोनाट्रेमिया माने सोडियम कम अछि ठीक अछि पुनी हाइपर कैलेमिया अछि पोटेशियम अधिका अछि तो पोटेशियम जोडी अधिका अछि सेडी मु पोटेशियम सप्लाई थोड़ी आउथरे देबी यस मैम बी करेक्ट अछि सेटा कहूची बी काहे करेक्ट हबो बी कहीं करेक्ट हम जे देख हाइपर कैलेमिया माने पोटेशियम लेवल अधिका अछि ना नहीं तो पोटेशियम लेवल अधिका थिला बेलु को मु पुनी आउ थरे पोटेशियम सप्लीमेंटेशन देबी ना कोन पुनी पोटेशियम दउथिबी पोटेशियम ऑलरेडी तार अधिका अछि पोटेशियम ऑलरेडी तार अधिका अछि हैला से जगह रे बी अवॉइड करिवो हां बी अवॉइड करिवो हां यस ए कंडीशन ता हम अवॉइड करिवा ए ट्रीटमेंट शुड एंटीसिपेट ए हम करेक्ट आंसर कोन करिवो बचरची सी yes a habo yes chalo next question number 80 a woman in labor suddenly develop a prolapsed umbilical cord after rupture of the membrane what is the immediate nursing priority encourage the woman to push apply fundal pressure relieve the pressure on the cord and expedite emergency obstetric management place the woman in a sitting position हाँ बुझिल तो हाँ हाँ एंटीसिपेशन माने अवॉइड बोली भाबुतलो कि तमे कार्टून एंटीसिपेटर माने होची से कोन करिवो आगु को कोन सी माने एंटीसिपेटर माने मी केमिति बुझेबी अवॉइडेंस तो जमा नहीं कोन से जो फर्स्ट स्टेप बा इनिशियल स्टेप से कोन नबो ताको आईडिया लगे कि से कोन करिवो सेडा होची एंटीसिपेट हैला क्वेश्चन नंबर 80 Question number 80. It is C. Very good. Relieve the pressure on the cord and expedite emergency obstetric management. Emergency obstetric management. Yes. ठीक अछि. Next, 81. A community health nurse observed that a patient's health-seeking behavior is strongly influenced by caste norms, family traditions, and local beliefs. Which sociological concept best explains this influence? Socialization, social stratification, social mobility, cultural lag. कहाँ बेडी को सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एटा बेस्ट एक्सप्लेन करछि जो जगह रे कि हमर कास्ट नॉर्म्स फैमिली ट्रेडिशन लोकल बिलीफ सब जिंस को नै रे हम सोशलाइजेशन होछि एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हमर हेल्थ स्टेटस एवडा को सब हमर ये हां एप्रोप्रिएट वर्क बा प्रायोरिटी वर्क हैला हेल्थ स्टेटस मेडिसिनल स्टेटस हमर जो ऑल राउंड ओवर बीइंग वेल बीइंग ता हमर सेटा एसेस होछि तो एटा हैला सोशलाइजेशन करेक्ट आंसर सोशलाइजेशन करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अरे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन माने हमर जो लेवल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन माने होछि लेवल ऑफ द नॉर्म्स ठीक एडी लेवल कथा कहनी एडी ओवरऑल हेल्थ सिक्योर कथा कहिछि ठीक अछि तो एडी हमर ऑप्शन ए हि जब करेक्ट आंसर socialization next a student who performed poorly in an examination blamed the examiner's unfairness despite having made little preparation which defense mechanism is primarily demonstrated projection rationalization sublimation regression कौन हम से निजे भले से पाठ पढ़नी
है निजे भलसे पाठ पढ़नी से कौन कह ना 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 ये सार्टा मोर खराब मार्क देते ए सार्टा मो किसी गज रखी से सार्टार मोर गोटे गोटे राग था मो से बोली मार्क देलेनी तो ये जो जिनसा जे देखौची ता माने कौन से कौन देखौची रैशनलाइजेशन नहीं रैशनलाइजेशन बोली कहले सर डिफेंस आड़ को पळेबो रैशनलाइजेशन माने सेटा डिफेंस आड़ को पळेबो से डिफेंड करिया पई बोली से एग्रेसिव हे जिवो रैशनलाइजेशन एटा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट हबनी एटा एटा प्रोजेक्शन हबो हे भगवान कौन करू जोगिरे तमे ए हबो करेक्ट आंसर एक्सक्यूजेस दोची ए जगह रे ठीक अछि passing on the blame onto someone else निजर unacceptable behavior को से accept न करिगिरी निजर खराब behavior को बा निजर भूल को accept न करिगिरी it they passes on the fault to someone else they passes on the blame to someone else एटा हे जाउची हमर कोन एटा होची हमर कोन प्रोजेक्शन ठीक अछि प्रोजेक्शन नेक्स्ट रैशनलाइजेशन माने सेठी हमर माने एग्रेसिव बिहेवियर आसी जाउची हैला यस यस ठीक अछि एग्जामाइन थिले हां एसएस था रैशनलाइज था वेरी गुड अ पेशेंट विथ schizophrenia states the television announcer is sending secret messages specifically to me हाँ the statement is best classified as delusion of grandeur delusion of persecution delusion of reference thought broadcasting कौन हम क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 एबे को it is delusion of reference very good next question number 84 a patient receiving clozapine developed fever sore throat and marked weakness which investigation is most important to perform urgently serum sodium liver function test serum creatinine absolute neutrophil count क्लोजापाइन आमर कौन कैरी करछि क्लोजापाइन आमर एग्रानुलोसाइट्स रो साइटोसिस रो रिस्क को कैरी करछि क्लोजापाइन नोछि जदी आमर तो ए जगह रे आमे एएनसी वाइटल को आमे चेक करिया दरकार एएनसी वाइटल कौन एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल absolute neutrophil count हैला D next a nurse studying a family finds that decision making financial control and authority are predominantly vested in the father this family structure is best described as patriarchal family matriarchal family egalitarian family na bilateral family question number 85 आमर एटा गोटे सोशल सिस्टम डा जोडी कि आमर डिसीजन मेकिंग पावर हे गला या फिर आमर फाइनेंशियल कंट्रोल हे गला ए सब जिंस आमर प्रायतः मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को माने ये करा जाउची तांको ऊपर ही भारटा पका जाउची ठीक अछि तो ए कंडीशन रे एटा को प्रकार फैमिली स्टेटस टा को हमें कहबा इट इज पैट्रियार्किकल फैमिली ठीक अछि ए टाइप रो सोशल स्टेटस टा आमर एनवायरनमेंट रे बा आम सोसाइटी रे बे एटा बनि कि रहिछि हैला correct next question number 86 a patient repeatedly checks whether the door is locked despite knowing that it has already been secured the behavior is most consistent with compulsion delusion illusion confabulation कौन हम ये क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 86 कौन इट इज कंपल्शन हैला कंपल्शन डिल्यूजन माने कोन इट इज फिक्स्ड एटा कंपल्शन टा होची रिपीटेटिव बिहेवियर्स उडाको ठीक अछि बाकी डिल्यूजन टा होची गोटे फिक्स्ड बिहेवियर फॉल्स बिलीफ एंड व्हिच इज नॉट ग्राउंडेड इनटू द रियलिटी फिक्स्ड false belief which is not grounded onto reality ये ही जब कौन डिल्यूजन इल्यूजन माने कौन मिसइंटरप्रिटेशन हैला तो मिसइंटरप्रेट हैला मिसइंटरप्रिटेशन कन्फाबुलेशन माने कौन
to fabricate the memory to fill in the gaps है fabricating the memories to fill in the gaps to fill in the gaps. Next, a patient taking lithium for bipolar disorder develop coarse tremors, vomiting, ataxia and slurred speech. What is the nurse priority action? Administer the next dose with food, hold lithium and notify the healthcare provider, encourage the patient to increase the sodium restriction, administer an additional dose to stabilize the mood. Question number 87. ऑलरेडी ताकू लिथियम नहीं गिरी है माने देख टिके लिथियम नहीं गिरी बाइपोलर डिसऑर्डर कोज ट्रेमर वोमिटिंग अटैक्सिया स्लॉट स्पीड सब अच्छी ताको पुणी आमे पुणी एडिशनली एडमिनिस्टर करबा कोन ना तार मूड भलो हबो बोली जमार भी एडा करबानी एडा हमर फेटल हे परिबो हैला फेटल हे परिबो आकू आमे कोन करबा वी नीड टू होल्ड द लिथियम जेहेतु लिथियम नेबा जो ये सब जिंस देखा जाउ वी नीड टू होल्ड द लिथियम एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैला बी हबो yes hold kariba. Next, which adverse effect is primarily particularly important to monitor in a patient receiving a high potency typical antipsychotic such as haloperidol? Severe constipation, gingival hyperplasia, extrapyramidal symptoms, hyperglycemia. Question number 88. एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्पटम्स जोड़ा कि आमर डिस्टोनिया एखाथीसिया आ सीरो पार्किंसोनियम देखा जाउची हालोपेरिडॉल जो नौचे आम ये सेटा गोटे हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिकटा है हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिकटा जोटा कि आमर एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्पटम को सी इंडिकेट करिवो है हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिकटा ठीक अच्छे आमर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स भितर कौन कौन आसी जाउची एक्यूट डिस्टोनिया akathisia आउ स्यूडो पार्किंसोनिज्म ठीक अच्छे yes akathisia. Next, question number 89. According to the concept of social mobility, movement of an individual from a lower socio-economic position to higher socio-economic position is termed as horizontal mobility, vertical upward mobility, intergenerational isolation, cultural assimilation. Question number 89. कौन होची लोअर स्टेटस रो हायर स्टेटस को से मूव कला तो एटी केमती मूव कला वर्टिकुलर अपवर्ड मोबिलिटी देखेला वर्टिकल अपवर्ड मोबिलिटी ठीक यस. Next, question number 90. A patient describe an event from childhood accurately but has difficulty recalling event that occurred immediately before a recent traumatic incident. This pattern is most suggestive of anterograde amnesia, retrograde amnesia, dissociative fugue ना paramnesia. एटा होची हमर रेट्रोग्रेड माने पुराना जिंस सब मन अछि बट जस्ट बिफोर द रिसेंट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से जिंस ओडा मन नै आउ एंट्रोग्रेड एमनेसिया रो माने होची नुवा मेमोरीज आउ से क्रिएट करि परिबनी हैला ठीक अछि प्रियंबदा नुवा मेमोरीज आउ क्रिएट करि परिबनी ऑप्शन नंबर बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. Next, question number 91. A patient experiencing a maniac episode is highly distractible, talks continuously, sleeps only 2 hours per night, and attempts multiple activities simultaneously. Which nursing intervention has the highest priority? Provide a highly stimulating group environment, encourage prolonged discussions about the unrealistic plans, maintain a low stimulation environment with clear brief limits, allow unlimited participation in recreational activities. Question number 91. पेशेंट एक्सपीरियंस कौन कुछ मैनियक एपिसोड हाईली डिस्ट्रक्टाइल कंटिन्यूअसली कथा होची स्लीप ओनली 2 आवर पर नाइट मल्टीपल एक्टिविटीज सहित से जड़ित होइकरी अछि तो ए जगह रे वी नीड टू मेंटेन अ लो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट विथ क्लियर एंड ब्रीफ लिमिट्स हैला ऑलरेडी एत डिस्टर्ब्ड अछि तो आमे से जगह रे आउथरे प्रोलॉन्ग डिस्कशन करबानी हैला कि ग्रुप करबानी कि अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन आ जा 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 जेंदे मौज मस्ती करिया करे से जिंस मते करबा नाही हैला
तो ये ऑप्शन नंबर सी will the correct answer. 92 a patient receiving an SSRI develop agitation, diaphoresis, hyperreflexia, tremor and hypothermia after another serotonergic medication is added. Which condition should the nurse suspect? Neuroleptic malignant syndrome, serotonin syndrome, anticholinergic toxicity, lithium toxicity. कौन अब question number 92 question number 92 yes it is serotonin syndrome हैला serotonin syndrome ए serotonin syndrome हेबा जोगु माने excessive altered mental status hyperactivity ए सब जिंस देखा जाउची एटा हिजबो हमर ऑप्शन नंबर ए serotonin syndrome हबो हैला B serotonin syndrome. Next, which statement best distinguishes primary group from secondary group? Primary group are characterized by intimate, enduring interpersonal relationships. Primary group always have formal written rules. Secondary group are based mainly on emotional intimacy. Secondary group exist exclusively with the families. With the families. ठीक अछि? कौन ऑप्शन नंबर A. Very good. Option number A. Primary group are characterized by intimate, enduring interpersonal relationships. Next, a patient who is unable to tolerate anger toward a supervisor begins shouting at a family member at home. Which defense mechanism is most consistent with this behavior? Displacement, reaction formation, intellectualization, identification. कौन बैठी माने नेगेटिव इंपल्सेस गुड़ाक बा नेगेटिव एक्टिविटीज गुड़ाक जोटा कि आमर जो जगह देबा कथा जो जगह एग्जिबिट करबा कथा से जगह एग्जिबिट न करिकि से आ गोटे जगह डिस्प्लेस करछि बा आ गोटे जगह से सेटा को एक्सप्रेस करछि एटा होछि आमर डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर टा हैला डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर कह जाउछि एटा को नेक्स्ट a patient with major depressive disorder says my family would be better off without me. What should the nurse do first? Hello. Reassure the patient that everything will improve, change the topic to a pleasant activity, directly assess the suicidal thoughts, intent and plan, leave the patient alone to provide the privacy. Question number 95. कौन करवा सी हाँ डिप्रेसिव डिसऑर्डर अच्छी ऑलरेडी डिप्रेसिव डिसऑर्डर से अच्छी हैला ऑलरेडी डिप्रेसिव डिसऑर्डर से अच्छी ताकू पुणी आमे एंटागोनिस्ट करिक नाना सब भल हो ठीक हो भल हो ये सब जिन एश्योर करवाटा ताकू आमेर कौन हम जे ताकू से जिनसटा ता अगेंस्ट जीवाटा कह हैला तार अगेंस्ट जीवाटा कह तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम जो फर्स्ट एक्शन टा करा हैला ना हाँ ठीक अच्छे ओके ठीक अच्छे ना ना तू ठीक कहूँ ए जिनसटा जो होची ना हैला ए जिनसटा को आम करिया दरकार डायरेक्टली असेस सुसाइडल थॉट्स एंड इंटेंट एंड प्लान हैला तो डायरेक्टली देखो एटा होची हमरो प्लेजेंट एक्टिविटी को चेंज कले सेटा चेंज ऑफ टॉपिक को आजिबो लीव द पेशेंट अलोन एका छाड़ीबा कथा टोटली नुहे हैला रीअश्योर द पेशेंट दैट एवरीथिंग विल इंप्रूव ए जिनसटा करिबाडा ना ए जिनसटा करिबा हमें को केस रे जते बेले हमरो ये रहउची माने कोन जे चांसेस ऑफ बीइंग क्योर्ड बा चांसेस ऑफ माने लेस लेवल रे एग्रेशन हमर कम देखा जाउची किंतु डिप्रेसिव डिसऑर्डर माने गोटे सीरियस लेवल रे डिसऑर्डर त जो जगह कि तार एंटागोनिस्ट तमे जब कहबा आरंभ करियो बोली कहले से तम सहित मध्य कथा हबनी हैला से तम सहित मध्य कथा हबनी ठीक अछि नेक्स्ट
Which medication is commonly used as an antidote for benzodiazepine induced excessive sedation in appropriate clinical circumstances? Naloxone, atropine, flumazenil, protamine sulfate. कौन है क्वेश्चन नंबर सी है करेक्ट आंसर फ्लुमाजेनिल है करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नालोक्सोन टा कौन ऑपोइड्स टा ठीक एट्रोपिन टा कौन एंटी कोलिनर्जिक बा ब्राडिकार्डिया इफेक्ट को आमर ट्रीट करबा पई बोली ठीक आ प्रोटामाइन सल्फेट टा हेपारिन नेक्स्ट a person adopts the language, custom and behavioral pattern of another cultural group while still retaining important element of their original culture. The process is called assimilation, acculturation, segregation, social isolation. Question number 97. ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଲଚର को सी अडाप्ट भी करूची बाकी नुआ कल्चर को अडाप्ट भी करूची आउ अन्य माने तार जो नेटिव कल्चरटा तार जो पुराना कल्चरटा सेटा को मते से रिटेन करके रखुची सेटा को भी से रिटेन करके रखुची एडा होची कहा प्रोसेसटा एडा होची एक्युलचुरेशन रा प्रोसेसटा क्लियर देखा जाउनी ब्लर हे गला कैमरा एबे तो ठीक होची एबे ठीक होची ना क्लियर देखा जाउनी एडी तो क्लियर देखा जाउची रे एडी तो क्लियर देखा जाउची ठीक है बे बी acculturation एबे ठीक अछि ओके हो 98 a patient hear voices with no external auditory stimulus is present when no auditory stimulus is present माने किछि तो ओडे बाहर किछि देख सुना जाउनी किंतु से मने मने किछि ना किछि तो से सुनी चलची ठीक अछि तो एडा कोन which term most accurately describe this phenomena illusion delusion hallucination obsession it is hallucination हैला the sensory perception दा जोडा कि हमर completely absence of any physical stimulus with completely absence of any physical stimulus फिर भी ताकु जदि से stimulus ता देखा जाउची बा सुना जाउची हैला सेडा हमर auditory hallucinations बोली कहै जाय yes hallucinations very good next a patient receiving an antipsychotic develops sudden high fever severe muscular rigidity altered consciousness and autonomic instability which complication should the nurse suspect neuroleptic malignant syndrome serotonin syndrome tardive dyskinesia acute dystonia question number 19 question number 19 कौन बेटा एडा होची न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट syndromes very good next and the last question for the day a patient taking an MAOI is prescribed a medication containing a sympathomimetic agent the nurse should be particularly concerned about the risk of severe hypotension hypertensive crisis profound hypoglycemia respiratory depression कौन हबो MAOI कौन एडा मोनोअमीन monoamine oxidase inhibitors ठीक अछि तो एडा हमर कोन सस्पेक्ट करछि हाइपरटेंसिव क्राइसिस को हैला इट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस बी ठीक अछि तो with this thank you everyone for the class thank you so much for joining बहुत ही भलो लागला बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास थिला हैला आगु को हमर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट गोटे पीवाईक्यू मैराथन मते प्लान होची विद इन 1 or 2 days आमे से पीवाईक्यू मैराथन मते करबा सेइटा रे मते इमिति एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार इमिति एक्टिव एंगेजमेंट दरकार क्लास रे एंड हमर क्लास ता निहाती भाबे इफेक्टिव थबो आज रो क्लास केमिति लागिला कोन लागिला मते निहाती कमेंट सेक्शन रे जणेबो ए लाइव ता सरला पारे मते जणेबो निहाती ठीक अछि तो see you next time मन होनी जेबा पई बट क्वेश्चन सरी गलानी आ किछ आ करि होबनी हला नेक्स्ट सेशन पुणी आउरी क्वेश्चन नै गे आसीबा ठीक अछि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऊपर मध्ये हमें प्लान करूछु क्वेश्चन करबा पई बोली वन लाइनर्स उडा करबा पई बोली हला तो बहुत ही शीघ्र क्लास करबा ठीक अछि बहुत ही शीघ्र क्लास करबा यस डेली क्लास करबा एबे हला तो
पीडीएफ यस मु विष्णुप्रिया ए सांगे सांगे क्लास सरू सरू मु ए पीडीएफ टा तुमको शेयर कर दूची हैला व्हाट्सएप ग्रुप रे तुमको शेयर कर देबी सी यू नेक्स्ट टाइम एवरीवन अंटिल देन बी प्रिपेयर्ड ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपरेशन चली थाउ जय जगन्नाथ समस्त को।